Chota Vicky is going to be on strike for the first ball. Picked up 3 wickets in that opening over of his. Majid Goli starts off with a fuller delivery that has been nailed down the ground. There is a fielder down there at long off, but he was a little too late in getting to the ball. A boundary to start the over. It was a very straight shot, and that's the safest area for any batter to hit, as they don't have any fielder over there. And mid-off was quite a little bit wide. So yes, that went for the boundary. Yeah, indeed. The long off fielder was pretty wide, because usually we have seen the long on and long off fielder standing pretty straight, almost within the eye line of the batter. Chota Vicky is still complaining something about the side screen maybe, or maybe the lights that are switched on in the futsal field. Maybe that is disturbing him. It's pure entertainment for the crowd here tonight. They have turned out in numbers. It's just the first game of the night. It looks like it's going to go right down to the wire. Definitely there is some movement in front of the side screen, which is clearly troubling the batter. Usually when we see youngsters starting playing cricket, they usually change their roles when they're converting from tape ball cricket to hard ball cricket. What was your initial role when you started playing cricket? When I was a fast bowler, when I started playing cricket, it was the very basic thing. I just wanted to bowl the fastest delivery of Pakistan. But later on in my career, very later on in my career, I changed myself into a batting all-rounder. Full toss. Has he knocked him over? Yes, he has! Completely boxed him with a slower one. Majid Goli is on a roll. He's a rock star for Malir Malangs tonight. What a delivery it was. What a delivery it was. It was a full toss delivery, but again, completely missed by the batter. And again, he turned. Again, he had no eye on the ball, and that cost us his wicket. Chota Vicky, known as Mohammad Waqas, has now been dismissed after scoring 11. It's 17 for 4. Well, Majid Goli has just picked up his 4th wicket. Magnificent spell this from the fast bowler. You don't usually see a fast bowler picking up 4 wickets, that when you are allowed to just bowl 2 overs in tape ball cricket. We saw Irshad Afridi picking up 4 the other night. What do you reckon? Can he pick up a 5? Well, he still have 4 balls remaining though. Well, Majid Goli right now is a one-man show. He is ruling the Malir Malangs game. Arsalan Jamshed coming into bat at number 6. Majid is going to be charging in. $17 for 4. He's got his tail up. He's teaming in. Slower one, picked up on the leg side. It's a bit of an anticlimax. That's going to go all the way for 6. Talk about confidence being shown here by Arsalan. It's the first delivery that he was facing, knowing that his side is 4 down, and he says to the bowler, take that. But an excellent shot. Arsalan showed that he wants to attack the best bowler of the side. And again, a massive hit. A very confident one by Arsalan. Yeah, but the job is still not over. They still need 50 more runs to win. DHA Dabanggs just need 1 cameo. Just like the way Mimran was batting for Malir Malangs in the previous innings. He just took the game away from the opposition. They were 30 for 3 and they managed to score 82 runs in the last 3 overs, knowing the fact that they had already conceded a lead of 40. What a comeback it is going to be if they can manage to win this game tonight, Malir Malangs. Getting an outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent catch by the wicket keeper.
He can do nothing wrong, Majid Goli. It's his 5th wicket already. What a catch that was. Sensational by the wicketkeeper. Again, I would say it was an exceptional catch. These, well, it's rightly said, catches win matches. And again, Malir Malangs has a great chance to win this game. Oh, he was diving forwards. Initially, the umpire might have been thinking that it might have landed in front of him, but it was safely taken. Arsalan Jamshed came and went, hit a 6 and has now been dismissed. It's 23 for 5. Three for 5. Mustafa, the new batter, in at number 7. They have lost half of their side already. We are still into the 3rd over of the innings. There you see Mustafa coming into bat at number 7 now. Five for 15. How often do you see a fast bowler picking up a fifer in tape ball cricket? And he hasn't even gone for plenty, just given away 15 runs. As the name suggests, he's just firing bullets at this stage. Outside the off stump, it has been carved away over the fielder at backward of point. It's not going to go all the way for 4. They're going to come back for a couple. Well, the batters are losing the shape when they're hitting MG. I mean, he is bowling exceptionally well. Maybe that's the reason he's so confident, and the batters are not getting up to the mark. And he hasn't done much of the batting in this tournament so far, Mustafa. It's their 2nd game, but it's their 4th innings already. It's the first time they have lost 5 wickets, DH Dabanggs. And the remaining target is looking like an Everest to climb. But still, anything can happen in the game of cricket. Can they pull a rat out of the magician's hat? Can Mustafa be the one, the star of the show for DH Dabanggs? Well, they still have chance, but they need to get the scoreboard going. The run side only, not the wicket side. It's the last ball of the over. It's the last ball of his spell. And it's a very good Yorker and very close to the off stump as well. The batter did right that he covered the line of the stumps, otherwise that would have crashed onto the off stump. A magnificent spell of fast bowling comes to an end from Majid Goli. 5 for 17 in a spell of 2 overs. After 3, DH Dabanggs are 25 for 5. With that, it's going to be a change in the commentary box. Mr. Farooq Riaz alongside Rana Ashfaq are going to take you through the next 3 overs. बहुत शुक्रिया जिशान और कायनात. 25 रन, 5 खिलाड़ी आउट. ज़बरदस्त, उम्दा और तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा माजिद गोली की जानिब से. सही मानों में उन्होंने अपने नाम की जो है वो लाज रखी है. सही मानों में उन्होंने अपने नाम की जो रेप्यूटेशन है उस पर वो लिव अप किया है. और अभी भी 48 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी हैं. खुशामदीद फरूक. बहुत शुक्रिया राना शाह जी. हाँ, बिल्कुल तबाहकुन परफॉर्मेंस, और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह की बॉलिंग आएगी और बैट्समैन जो है वो जवाब नहीं दे पाएंगे. लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली वो बैकफुट पे चली गई है DH दबंग. मैच अभी भी उनके हाथ में है. 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग्स आना बड़ी ज़रूरत है, और 73 रन का टारगेट बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है. और आने वाले 1-1.5 ओवर में अंदाज़ा हो जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है. अच्छी तादाद में तमाशाई भी मौजूद हैं जो मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और दोनों टीमों के डग आउट्स में भी उनकी मैनेजमेंट के लोग मौजूद. 48 रन चाहिए 18 गेंदों पर, और 17 रन दे के 5 विकेटें माजिद गोली ने 6 ओवर्स गेम में टेप बॉल में आउटस्टैंडिंग. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टेप बॉल में बैट्समैन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि पंजाब के जो अक्सरियत के टूर्नामेंट्स हैं जिनमें वाइड जो है बहुत छोटी होती है, बहुत कम बॉलर के पास मार्जिन रहता है, और वैसे ही बॉलर्स के लिए बहुत कम चांसेस हैं इस टेप बॉल क्रिकेट में. लेकिन यहाँ क्योंकि एक तो ट्रैक सीमेंट नहीं है,
टर्फ विकेट है, और दूसरा ये कि एक बाकायदा पूरी विकेट है, ऐसा नहीं कि 28-30 कदम की विकेट है। तो बॉलर्स के लिए चांसेस हैं और बॉलर्स कामयाब हो रहे हैं। और मुझे शाहजहां की बातें बड़े अच्छे अंदाज में याद आ रही हैं, जो कि मायानाज बॉलर रहे हैं ओवर द ईयर्स टेप बॉल क्रिकेट के जहीर कालिया के साथ। अली नए ओवर के साथ, और इस गेंद को ऊंचा खेले, लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद हवा में, फील्डर के हाथों में, एक और विकेट। बॉलर्स की रात लग रही है यहाँ पर। 6 खिलाड़ी आउट है 25 रन पर। इस बार अली ने अपना अकाउंट ओपन किया एज अ बॉलर। यहाँ से मुश्ताक बड़े शॉट खेले गए और ज्यादा उनके पास वक्त नहीं था लॉन्च करने का, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं थी और बहुत ही आसान कैच, कंफर्टेबली उन्होंने पोजीशन बनाई और कैच मुकम्मल किया। 6 विकेटें गिर चुकी हैं और कप्तान डीएच दबंग के वापस जाते हुए 1 रन बनाने के बाद 25 पर 6। कहना होगा कि तहस नहस कर दिया है डीएच दबंग्स की बैटिंग को अब तक मलीर मलंग्स के बॉलर्स ने, और एक वो ऐसा टारगेट जो कि बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा था, अब वो बड़ा दिखाई दे रहा है। 17 गेंदें 48 रन चाहिए। तो मैं जिक्र कर रहा था शाहजहां और जहीर कालिया का। कर्नल जाहिद भी एक ऐसे खिलाड़ी थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि वो उन हालात में भी जहाँ बॉलर्स के लिए बिल्कुल कम चांसेस थे, ओवर द ईयर्स बहुत विकेटें ली, बहुत अच्छा खेले, और शाहजहां इस टूर्नामेंट में भी खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बॉलर्स गुजरे हैं या हैं अभी भी, जिन्होंने बहुत बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा टेप बॉल में किया है। मगर कहीं ना कहीं जो ये विकेट है, ये जब इस विकेट को समझ गए हैं बॉलर्स कि यहाँ पर इतना आसान नहीं है स्ट्रोक मेकिंग करना, तो वो कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मार्जिन ऑफ एरर हमेशा से कम रहा है टेप बॉल में, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन परफॉर्मेंस आपकी रहे है तो यकीनन वहाँ पे बैट्समैन को मुश्किल हो सकती है। वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे और वे गलती करेंगे। मोहम्मद अवेद सलीम आए सामने करेंगे। अली जिन्होंने एक खिलाड़ी आउट कर लिया है, महज 7 रन दिए हैं। फील्ड का जायज़ा अगर हम ले सकें तो विकेट कीपर के बाएं जानिब जो है वो एक फील्डर मौजूद है, जो कि फाइन लेग की पोजीशन पे है। ये हम देख सकते हैं। मैस्कॉट्स भी मौजूद हैं ग्राउंड से बाहर, और साथ साथ लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी बाउंड्री पे मौजूद है। वाइड मिड विकेट पे काव कॉर्नर पे एक खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड में मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, पॉइंट अभी भी सर्कल के अंदर है। अली आपकी स्क्रीन पर जो विकेट ले चुके हैं, गॉड स्ट्रेल अप, यकीनन उनका मोराल, उनका हौसला बुलंद होगा, और अभी तक अपने फील्डर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आप मोबिलाइज रहिए, तैयार रहिए। अली चले, तेज दौड़ते हुए हमसे दूर। बैट्समैन ने इस मरतबा ऊंचा खेल दिया इस गेंद को, और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के अंदर। फील्डर ने अपने आप को प्लेस किया और बड़ा खूबसूरत कैच। वाओ, जितनी तारीफ करें वो कम है। एक मौके पे ऐसा लगा पहले इंप्रेशन में कि शायद गेंद क्लियर कर जाए फील्डर को, मगर फील्डर ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और शानदार कैच लिया। एक और विकेट, बैक टू बैक विकेट, और बिल्कुल बाउंड्री के एज पे कैच मुकम्मल किया। प्रेशर कैच था, बॉल को पहले रिबाउंड किया और खुद भी अंदर आए। बहुत अच्छी टेक्निक, कूल एंड काम, और बिलाखिर बड़े आसानी से मैच कैच मुकम्मल किया। दाऊद हैं जो कि बहुत ही शानदार फील्डर हैं, और ये कैच उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही आसान कैच था। 0 पर आउट हुए अवेद सलीम 25 पर 7। ऑल आउट होने का खतरा मौजूद है। उमर है नए बैट्समैन। कुल मिलाकर 20 गेंदें इस इनिंग्स की हुई हैं और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मोहम्मद उमर क्रीज पे पहुंचे हैं, और बॉलर यहां पर अली हैट्रिक पे आ गए हैं। कैन ही गेट द हैट्रिक इन? विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक, उनके पीछे फाइन लेग, थर्ड मैन, पॉइंट कवर ऑफ साइड में। अली चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। बैट्समैन बाहर आए, बीट हुए। दैट वाज अ जैफ ऑफ अ बॉल, पीच ऑफ अ बॉल। गेंद ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर गिरी और फिर बाहर की जानिब निकलती हुई विकेट कीपर के पास। वाओ, बहुत ही अच्छी बॉल, हैट्रिक अवॉइड कर गए। अब कदमों का इस्तेमाल करके थोड़ा आगे जरूर रहते हैं। विकेट कीपर एक्साइटेड थे, लेकिन कोई रिस्पांस बॉलर की तरफ से नहीं था, और लाइन को किल करने की कोशिश की 2-4 कदम आगे बढ़ के, लेकिन कंप्लीटली मिस हुए। डॉट बॉल, 2 विकेटों के बाद एक डॉट बॉल। रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे डीएच दबंग के लिए। 15 गेंदें 48 रन चाहिए। डीएच दबंग दबाव का शिकार, परेशानी उनके कैंप में। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। 4 गेंदें की हैं, 2 गेंदों पे विकेटें ली, 2 डॉट की। बिल्कुल बैट्समैनों को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए।
ऐसा नहीं लग रहा कि डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी की विकेट है, बल्कि लग रहा है कि पर्थ की पुरानी विकेट है 90s की, और वहाँ पर तबाहकुन बॉलिंग कर रहे हैं वकार यूनुस, वसीम अकरम या फिर ग्लेन मैकग्रा। टेल एक्सपोज हो गई यहाँ पे डीएचए दबंग की। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि टेप बॉल क्रिकेट में कि किसी बैटिंग लाइनअप की टेल एक्सपोज हो जाए। 3 विकेट सिर्फ रह गई हैं, रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन वो कोशिश करेंगे क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 बड़े ओवर्स की ज़रूरत है। एक और बड़ी अच्छी गेंद, रन लेने के लिए दौड़े तो हैं बैट्समैन, थ्रो विकेटों में नहीं लगा, पैकअप किया गया स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास और 1 रन मिला लेग बाय की सूरत में। और अब चलते हैं हिना की तरफ। Thank you so much. Well, DHA Dabanggs are trying their best to chase down the target, but let's find out कि उनके ओनर क्या समझ रहे हैं इस वक्त, क्या फीलिंग्स है उनकी। Well, दानिश खान, owners of DHA Dabang team के ओनर मेरे साथ मौजूद है। Thank you so much for joining us on the sidelines. How are you doing? I'm good. आप कैसे हैं? ठीक ठाक? Wonderful. Thank you so much. Well, क्या लगता है 73 का टारगेट है? बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर माशाल्लाह जो मौजूद थे, क्रिकेट यही है कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है माशाल्लाह, एक इम्प्रेशन जमाए रखा और उन्होंने बहुत बड़े टारगेट को बहुत आसानी से लड़कों को आउट करके अचीव करने की कोशिश की है और यही क्रिकेट है बेसिकली ना, और यही इंजॉयमेंट है और यही मज़ा है। Well, दानिश खान सीम सो काम, उनकी टीम को भी बड़े काम और कंपोज होके इस टारगेट को चेस डाउन करना होगा और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। इस लीग के बारे में क्या कहेंगे, जो टीम एंटायर टीम जो एफर्ट लगाई है इस लीग को ऑर्गेनाइज करने के लिए? जी ज़बरदस्त, हमेशा फर्स्ट एडिशन से लेके माशाल्लाह आज तीसरा एडिशन है KTPL सीज़न 3 माशाल्लाह, और हम फर्स्ट से लेके पहले सीज़न के अंदर तो हमारी भी बस कोशिशें यही होती थी कि क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं था, तो फर्स्ट सीज़न हम हारे थे। सेकंड उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टीम चैम्पियन बनी थी एडिशन में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि मैच हम खेल रहे हैं और आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है तो मलीर मलंग। तो इस बार भी चैंपियन बनने की पूरी तैयारी है टीम की? मेरा हमेशा से स्लोगन रहता है एक शुरू से कि ज़बरदस्त जो अच्छा परफॉर्म ग्राउंड के अंदर करेगा वो मैच जीतेगा। इधर यही पोजीशन होनी चाहिए, हर टीम की फीलिंग्स भी होनी चाहिए, जाके के लड़के जो परफॉर्म करेंगे उनको उनका रिजल्ट खुद मिलेगा। बट बात यह है कि अच्छा क्वालिटी क्रिकेट और कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है आज के मैच में। बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऐसी टीम जो कि जफ़र की टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बैठ के ही मिलके बनाई है और मैंने मैच से पहले भी जफ़र भाई को बोला था आज टीम आपकी जीत रही है। वेल थैंक यू सो मच, लेकिन वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपकी टीम भी जीते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द साइडलाइंस। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया हिना। 4 ओवर्स मुकम्मल, 27 पर 7 और अब सभी मक्सी बॉलिंग करेंगे और डिस्कशन यहाँ पे जारी है कि किस तरह के बाउंड्रीज को रोकना है। सिर्फ 3 विकेटें लेनी है, बाउंड्रीज को रोकना है और मैच में तकरीबन कि इनके नाम हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 ओवर बाकी है और यू नेवर नो के क्रिकेट में अगर कुछ एक्स्ट्रास की सूरत में या बड़े शॉट की सूरत में लम्हे भर में भी मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। जो 40 रन पॉसिबल हैं ट्रेप बॉल में, हम देखते हैं बड़े बड़े ओवर्स आते हैं 30-30 रन के, 32-32 रन के, और अंपायर ने आखिरी पावर प्ले का इशारा किया है जो कि तीसरा और आखिरी पावर प्ले है जो ओवर नंबर 5 से 6 तक जारी रहेगा। और बैट्समैन स्ट्राइक लेने के लिए मुस्तफ़ा तैयार हैं 3 के इनफरादी स्कोर पर। काफ़ी फील्डर्स जो हैं वो एनर्जेटिक लगे हैं, काफ़ी निम्बल एंड अजाइल लगे हैं, फील्ड में बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया गया है, अपने बॉलर्स को पैकअप किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है फील्डर्स ने, और यही वजह है कि डीएचए दबंग्स के 7 खिलाड़ी 27 रन पर नॉट आउट हैं। बल्कि आज दबंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है मलीर मलंग्स की इस इनिंग्स में। और इस मरतबा बैट्समैन ने गेंद को हिट किया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, आ गए और कैच भी ले लिया। एक और विकेट, कोई स्ट्रोक ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और फील्डर्स कोई कैच गिराने के लिए तैयार नहीं यहाँ पर। और डीएचए दबंग्स नाउ डीपर इन मायर, पूरी तरह से दलदल में फंस गए हैं और 8 खिलाड़ी 27 पे आउट। जी हाँ बिल्कुल, अब सभी की बारी थी कि वो विकेट हासिल कर अपना अकाउंट ओपन करें। पहली बॉल पर उनको स्मैश किया और मिमरान है बॉल के नीचे, 2 प्लेयर से कन्वर्ज हो रहे थे, लेकिन आसान कैच यहाँ पर। हनीफ 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। 27 पर 8 डीएचए दबंग। आजकल बड़ा कंट्रास्ट है, कभी कभी इस मैच में भी देखे, पहली इनिंग्स में 121 रन लिए, अच्छी खासी लीड ली और फिर 27 रन पे 8 खिलाड़ी आउट। इस तरह हम देखते हैं कि श्रीलंका एक मैच में 345 कर रही है, फिर 50 रन पे आउट हो रही है एशिया कप के फाइनल में, फिर 55 पे इंडिया में आउट। और बल्कि बिग बैश जो लास्ट ईयर का बिग बैश था, मेंस बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में, अ टीम गॉट आउट एट 15 रन पे एक टीम ऑल आउट हो गई थी। तो कभी तो बहुत बड़े रन्स, कभी कुछ भी नहीं। ये भी आज 1 रन बनेगा क्या दूसरे की ट्राई करेंगे, नहीं, एक के साथ इक्तिफा किया।
बहुत ही अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है ज़बी ने, और डीएच दबंग के ओनर थोड़े परेशान ज़रूर हैं, और उन्होंने खुद भी अभी इंटरव्यू में कहा कि कुछ पता नहीं क्रिकेट का कब परफॉर्मेंस ऊपर हो, कब परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाए। और यहाँ पर मलंग जो थे उन्होंने सही टाइम पे कमबैक करके प्रेशर अप्लाई किया। वैसे क्रिकेट में बहुत अरसे से होता चला है। मुझे याद है 50s में 60s में गैरी सोबर्स लेके आए थे वर्ल्ड 11 ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ओवर में वो मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। इसी के साथ ये ओवर मुकम्मल हुआ 36 पे 8। छह गेंदों पे 37 रन चाहिए। तो हुआ फर्क ये था कि वर्ल्ड 11 क्योंकि थॉमसन और लिली उन दिनों बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे, और कहा वहाँ ये जाता था एच टू एच, टेस्ट टू टेस्ट, इफ़ लिली डजंट गेट यू टॉमो मस्ट। तो उन्होंने 58 पे आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलियावी मीडिया आपको पता है पहले से बड़ा तेज़ है, उन्होंने लिखा गैरी सोबर्स तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो गैरी सोबर्स ने अखबार पढ़ने के बाद अपने साथियों का, आप नेक्स्ट इनिंग्स में देखना मैं क्या करूँगा, उन्होंने अकेले 258 कर दिए। तो ये क्रिकेट में ये गैर यकीनियाँ जो हैं, अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, वो बहुत पुरानी हैं। मैं जिक्र कर चुका हूँ यहीं कहीं किसी स्पेल में कि टाई टेस्ट मैचेस हुए हैं। 3 टेस्ट मैचेस क्रिकेट की तारीख में टाई हो चुके हैं। टेस्ट मैचेस 5-6 दिन खेल होने के बाद टाई हो गए। और टाइमलेस टेस्ट मैच भी हुआ है, 10 दिन खेल जारी रहा, फिर कुछ नहीं हुआ। जहाज़ पकड़ना था साउथ अफ्रीका वालों को, जहाज़ पकड़ के चले गए। तो क्रिकेट इज़ ए ग्रेट गेम, और इस गेम को खेलने में कामयाब हुए। हवा में फील्डर अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। ओह, पुट डाउन रेयरिटी। इस इनिंग्स में कैचेस नहीं गिरे हैं, मगर ये एक ऐसा कैच है जो नहीं हो सका। लेकिन अब शायद अफोर्ड कर सकते हैं कैच गिराना, क्योंकि 5 गेंदों पे 36 रन चाहिए अभी। और किसी बॉलर को मैंने नहीं देखा कि अगर उनके बॉल पे कैच ड्रॉप और वो मुस्कुराएं, लेकिन यहाँ पे वो बेहद काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। तंजिया हंसी थी, लेकिन एक और शॉट, बड़े शॉट के लिए गए, पुल किया है और कैच हो सकता है, बल्कि 4 रन के लिए। चौका भी नहीं रोक पाए, कैच भी ड्रॉप किया, और इस बार नाराज हैं उबैद। 4 रन मिले, और लेकिन बहुत दूर है अभी भी टारगेट से डीएच दबंग। ये आप थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कॉम्प्लेसेंट होना। उसकी वजह यह है कि 4 गेंदों पे अगर आपको 32-33 रन चाहिए हों, तो जाहिर है कि आप फील्डर्स पे इतनी नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे, जो कि बॉलर कर भी नहीं रहे। 41 रन, 8 खिलाड़ी आउट स्कोर है। बॉलिंग कर रहे हैं उबैद, जिन्होंने अब तक 5 रन दिए 2 गेंदों में, मगर दोनों मरतबा एक तरह का चांस था फील्डर्स के पास। 3 गेंदें बाकी बची हैं, और 3 गेंदों पे 31 रन चाहिए। अब तो वो ये कह सकें काश कोई 12 रन की बाउंड्री हो, काश कोई 14 रन की बाउंड्री हो, लेकिन मैक्सिमम बाउंड्री 6 रन की। हाँ, ये है कि आप नो बॉल या वाइड से हेल्प ले सकते हैं। जी, नो बॉल पे छक्के लगे, फिर फ्री हिट पे छक्का हो, उसके बाद एक और नो बॉल हो जाए, और इस तरह की बॉल करेंगे तो कोई चांस नहीं कि कोई नो बॉल हो। और फुलर बॉल थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और अब मैच जो है कंप्लीटली ऑफिशियली हर लिहाज से बल्कि मलीर मलंग्स के फेवर में आ चुका है, और बड़ी ही शानदार कमबैक। और ये देख, ग्लूमी फेसेस, सैड फेसेस। ओह, 40 रन की बर्तरी लेकर 6 ओवर्स के खेल में मैच हारने की तरफ जा रहे हैं। नो बॉल हुई है, रन भी मिलेंगे इस पे, मजमूई तौर पे 4 रन मिल जाएंगे, क्योंकि 2 रन दौड़े हैं, और 2 रन नो बॉल के होंगे, बॉल दोबारा होगी। वही जिक्र कर रहा था राणा आपसे कि नो बॉल हो और उस पर कुछ छक्का लगे, लेकिन बहरहाल 2 रन यहाँ पे बने। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं जो परेशान करे मलीर मलंग्स को। ये देख सकते हैं आप, खुर्रम चकवाल और उनके साथी काफ़ी मायूस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है हमारी बैटिंग के साथ, मगर यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही इसकी गैर यकीनियाँ हैं। क्या क्या याद करें, 99 के वर्ल्ड कप में पूरा पाकिस्तान का मीडिया और तमाम लोग ये कह रहे थे साउथ अफ्रीका से बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ फाइनल में आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया ने हमें 132 पे ऑल आउट कर दिया। और वर्ल्ड कप का फाइनल कोई 20 ओवर में ख़त्म हो गया दूसरी इनिंग्स में, और यहाँ ये मैच ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हुआ है मलीर मलंग्स की फतह के साथ, जिन्होंने 25 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। एक आउटस्टैंडिंग कमबैक, पहली इनिंग्स में लीड कंसीड करने के बाद उन्होंने अच्छी बैटिंग की, अच्छे रन बनाए, 73 रन का टारगेट दिया, और फिर डीएच दबंग्स को पूरी तरह से दबोच लिया। बड़ी तूफ़ानी जारहाना बॉलिंग, और माजिद गोली की जितनी तारीफ़ करें वो कम है। माजिद गोली हीरो ऑफ द नाइट हैं, हीरो ऑफ दिस मैच हैं। बहुत उम्दा, खूबसूरत और यादगार बॉलिंग का स्पेल किया है, और ही टुक अ 5 फॉर हियर।
बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। हम बात करते हैं बड़े बड़े स्कोर की और बड़े चौकों की, छक्कों की, लेकिन बॉलिंग स्पेल इतने हमें देखने में नहीं आते। लेकिन ये 5 पर जो माजिद गोली ने लिया है वो यकीनन एक बड़ी परफॉर्मेंस में से होगा इस ओवरऑल टूर्नामेंट की। और बॉलिंग की अगर हम बात करें, तीसरा सीज़न है तो ओवरऑल तमाम सीज़न के हिसाब से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये होगी माजिद गोली की। और बहुत शानदार कमबैक। बहुत कम लोगों ने शायद ये सोचा हो कि 40 रन की लीड लेने के बाद DH दबंग जो है वो लूजिंग साइड पर फिनिश करेगी। और दाऊद कप्तान है, बहुत ही खुश, बहुत ही मुतमईन और बहुत अच्छी कप्तानी भी इन्होंने की। पहले ही ओवर से उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया और यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिला। खुरम चकवाल, विक्की, कोई भी ऐसा नामी ग्रामी बैट्समैन जो है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। मोहम्मद समी है कोच मली मलंग्स के, यकीनन बहुत खुश हो गई है। हाईलाइट्स इस तरह इसकी हाईलाइट शुरू हुई और पहली विकेट गिरी, आउटसाइड एज, विकेट कीपर ने कैच लिया। फिर एक और चांस यहाँ पे क्रिएट हुआ, दूसरी विकेट गिरी और अभी तीसरी विकेट, लीडिंग एज, आसान कैच। बहुत कम गलती की उन्होंने कैचिंग में। उसके बाद एक और शॉट आया बड़ा, फिर 6 रन के लिए गया। उसके बाद स्मैश किया और डाउन द ग्राउंड और बोल्ड हो गए। छोटा विकेट कंप्लीटली मिस कर गए। बड़ा शॉट ऑन साइड पर 6 रन के लिए। उसके बाद कैच विकेट कीपर ने लिया, अच्छा स्मार्ट कैच। एक और कैचिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत कम मौकों पर इन्होंने शॉट को अच्छा मिडिल किया। अच्छा कैच वाइड लॉन्ग ऑफ पर, फिर एक और विकेट, बैक टू बैक विकेट मिली थी यहाँ पर राइट एट द एज ऑफ द बाउंड्री। दाऊद खान थे, बस सुकून से उन्होंने मुश्किल कैच मुकम्मल किया। उसके बाद ये एक और कैच, अच्छी कम्युनिकेशन भी रही कैच लेने के दौरान और इस तरह 8 विकेट हासिल की और 25 रन से ये मैच जीतने में कामयाब हुए। 47 पर इनिंग्स को रोका और ये देखें, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। 11 रन बनाए वकास ने, बाकी सारे बैट्समैन जो थे वो सिंगल फिगर्स पे थे। जवाद ने 10 बनाए, एक्स्ट्रास 8 और 6 ओवर्स के बाद 47 पर 8। बॉलिंग के लिए बहुत कुछ है बात करने के लिए। 5 विकेटें ली, 17 रन दे के माजिद गोली ने। 8 for 2 फॉर अली, 9 for 1 फॉर जबी और 11 for none फॉर उबैद। ये है फाइनल हेडलाइन। मली मलंग्स ने मैच 25 रन से अपने नाम किया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ।
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 6th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां 84 कंट्रीज़ में जहां हमारी नशरियात जा रही है, आप तमाम लोगों को डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से खुशामदीद कहता है। ये है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। 2 इनिंग्स के मैचेस जब होते हैं तो फिर सूरत हाल का पता नहीं होता। आज डीएचए दबंग डिफेंडिंग चैंपियन जो बहुत ही एक कॉम्पैक्ट और मजबूत टीम दिखाई देती है, आज वो एक बड़ी लीड ले जाने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद मलीर मलंग्स का मलंगों वाला कमबैक दिखाई दिया और उसके बाद वो मैच 25 रन से जीतने में कामयाब हुए। वेरी वेल प्लेड मलीर मलंग्स, जिन्होंने डीएचए दबंग को 25 रन से शिकस्त देकर अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, मिस्टर अली खालिद गजनवी, ग्रुप चीफ इस्लामिक बैंकिंग यूबीएल अमीन। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ यहाँ मौजूद है मिस्टर आरिफ, मिस्टर सादिक मोहम्मद, कोई और नहीं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे एक और स्पॉन्सर ओसाका लाइट्स है, उनके सीईओ मिस्टर शमीम अहमद, थैंक यू वेरी मच सर। उनके साथ मिस्टर आरिफ अकमल सैफी सीएफओ यूबीएल, और उनके साथ मिस्टर शिराज आजम हेड ऑफ ट्रांजैक्शन यूबीएल। उनके साथ मिस्टर फैसल जाहिद मलिक चेयरमैन एंड सीईओ पाकिस्तान ऑब्जर्वर। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ मलीर मलंग्स एंड सेक्रेटरी जेडीसी मिस्टर जफर अब्बास, जफर भाई आज तो बड़ी ज़बरदस्त। और उनके साथ आज की लूजिंग टीम के ऑनर जो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं डीके दानिश खान, थैंक यू वेरी मच, ऑनर ऑफ डीएचए दबंग। आज के इस मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस दिखाई दी। खुर्रम चकवाल ने पहली इनिंग में 55 नॉट आउट रन ऑन जस्ट 17 बॉल्स विद 1 4 and 8 sixes। उनके साथ उमर शहजाद 38 ऑफ 10 बॉल्स विद 2 4s and 4 sixes। जबकि माजिद गोली, क्या गोली वाली बॉलिंग की आज माजिद ने, पहली इनिंग में 17 for 5 and सेकेंड इनिंग 17 for 3। वेरी वेल बोल्ड माजिद गोली, लेकिन वो बैटर जिसने दूसरी इनिंग में अपनी बैटिंग से अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन में लाए कि वो फाइट करने के काबिल हुई। 47 on 17 ball with 3 4 and 4 sixes in first inning and 73 not out in just 14 ball with 4 4s and 9 sixes। Mimran, very well played Mimran। मिमरान आज तो कमाल कर दिया आपने, जितनी बड़ी लीड डीएचए दबंग की टीम ले गई थी और उनकी बॉलिंग भी बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत बड़ा टास्क था आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मुश्किल मैच था हमारे लिए, लेकिन कोचेज़ ने सारी मैनेजमेंट हमें बहुत सपोर्ट किया कि एंड तक जाना है, तो हम एंड तक गए अटैकिंग गेम की और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। वैसे ओवरऑल आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लड़के मर्ज हो गए, माजिद गोली का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। जी टीम हमारी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, काफ़ी बैलेंस साइड है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है अच्छा, बॉलिंग साइड भी हमारी अच्छी है, बैटिंग भी तगड़ी है, और माजिद गोली ने आज कमाल कर दिया माशाल्लाह, मैच जितवाया हमें। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस मिमरान, विश यू वेरी गुड लक फॉर द रिमेनिंग मैचेस। आइएगा ट्रॉफी लेके आइएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आएंगे। मिस्टर अली खालिद गजनवी साहब, आप मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पेश करेंगे। आज के मैन ऑफ द मैच मिमरान। इसके साथ मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर आरिफ अकमल सैफी साहब से, सर आप प्लीज आगे आएंगे और विन बोनस, मिमरान आप तशरीफ लाइएगा, मैन ऑफ द मैच का विन बोनस रिसीव करेंगे। मिस्टर आरिफ अकमल सैफी सीएफओ यूबीएल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शमीम अहमद सीईओ ओसाका लाइट, सर आप आगे आएंगे और हर मैन ऑफ द मैच के लिए ओसाका का क्रिकेट टेप तो है, अब ओसाका का गिफ्ट हैम्पर भी हुआ करेगा। मिमरान प्लीज तशरीफ लाइएगा, ओसाका लाइट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर फैसल जाहिद मलिक साहब, आप आगे तशरीफ लाएंगे और ये सिलसिला शुरू किया है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट ने कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें से एक फैन ऑफ द मैच भी होगा। तो आज के फैन ऑफ द मैच मोहम्मद अमान, कम ऑन अमान, भाग के आ जाओ, शाबाश, आइए, वेल डन अमान, आइए अमान, क्या आपकी चाल है भाई, जबरदस्त किस्म की। अमान आ जाए। फैन ऑफ द मैच मोहम्मद अमान। इसके साथ साथ आज जफर अब्बास भाई की टीम जीती है तो फिर इनामात तो होंगे यहाँ पर। पीजेपी ट्रैवल की जानिब से हर छक्के पे 10,000 रुपए, तो 1,30,000 रुपए तो मिमरान आपके हो गए। हर रनआउट पे, हर कैच पे 10,000 रुपए, हर विकेट पे 10,000 रुपए पीजेपी ट्रैवल की जानिब से। अब मुबारक हो आप तमाम लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली खालिद गजनवी साहब, हमारा टूर्नामेंट आपने स्पॉन्सर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसा लगा, वैसे एंजॉय किया? नहीं, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट। और क्रिकेट लविंग नेशन है तो क्रिकेट तो सबको ही पसंद है और सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी क्रिकेट खेलने को ही मिल रही है, लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को ही मिल रही है, तो इससे तो बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड स्पॉन्सरिंग ओवर इवेंट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मिस्टर अली खालिद गजनवी साहब, मिस्टर आरिफ अकमल सैफी साहब, मिस्टर शिराज साहब, मिस्टर फैसल जाहिद मलिक साहब, मिस्टर सादिक मोहम्मद साहब, मिस्टर शमीम अहमद साहब, जफर अब्बास साहब एंड दानिश खान साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही। सेकंड मैच का टॉस सबसे थोड़ी देर के बाद रेडी है, जहां दानिश अनीस आपको ज्वाइन कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Well, welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where we are all set for the second match of the day to be played between North Nawabs and Clifton Populars. Now, this is going to be a very interesting match because both these teams are still looking for the first win of the tournament. Here they are yet again to win their first match. We're all set for the toss. I have both the captains here with me. From North Nawabs, we have the captain Shafi Agha. From Clifton Popular, we have the captain Asad Shah along with match referee Naeem Ahmed. Right, gentlemen? I believe Asad Shah is flipping the coin. Let's go get on with it. Badar X was the call. KTPL. And it's KTPL. Clifton Populars have won the toss. Asad Shah, क्या करने का फैसला किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करेंगे, पहली इनिंग में टोटल सेट करेंगे, वे प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे। इनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। जी बिल्कुल, लास्ट इनका मैच देखें, इन्होंने 70 स्कोर सेव किया। कोशिश करेंगे एक मैक्सिमम स्कोर इनके खिलाफ सेट करें और इंशाल्लाह हमारी बॉलिंग अच्छी है, उससे बचाएं इंशाल्लाह। ठीक है। असद, कोई तब्दीलियां की हैं आपने टीम में? जी, टीम में एक चेंजिंग की, अरबाज खान खेल रहे हैं हसन भट्ट की जगह। ठीक, असद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। राइट, शफी आगा पहले मैच में अनफॉर्चुनेट रहे, आप बहुत ज़्यादा कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया आपने। सबसे पहले ये बताएं, चेंजेस किए कोई टीम में? नहीं, सेम टीम खेल रही है। तो आज ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ें भी थी पिछले मैच में, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनमें इंप्रूव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पहले इनिंग में जो चीज़ें हमने गलतियाँ की थी वो दूसरी इनिंग में हम लोगों ने सुधार ली। शफी आगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच सर। थैंक यू। Right, ladies and gentlemen, the word from the center is Clifton Populars have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
So here we are. Welcome back to every one of you. With match number 7, North Nawabs are taking on Clifton Populars. Live all the way from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. And the news from the centre is that Clifton Populars have won the toss and opted to bat first. With me is Zishan, as both of the umpires are making their way to the centre. Welcome once again, Zishan. Yeah, thank you so much, Palak. Yes, I'm still not over the victory earlier for Malangs against DHA Dabanggs. What a performance that was. DHA Dabanggs, not only they were a very strong side on paper, but they've got some very good names as well. But look at how convincingly they were defeated in the first game tonight. But now, bring your focus back onto tonight's second game. Clifton Popular up against North Nawabs. It's an important game for Clifton Popular because they could not get up to a good start against defense DHA Dabanggs in the tournament opener, and they suffered a defeat. Tonight they will be looking to make a comeback and get those crucial 2 points. Yeah, as we see that the team is making their way to the centre, and both of the openers from Clifton Populars are going to the centre as well. Fahad Mia Channu, the tall fellow, with his partner, and he will be definitely lining up to perform big tonight because all the expectations as people expect from somebody like Khurram Chakwal, North Nawabs, Shafi Agha the captain, Saifullah, Yahya Khan, Zain Pathan, whereas Clifton Populars, Asad Shah the captain, Fahad will be huge responsibility on him, and Farhad Abdali the bowler later on will be a lot depending on him as well. Yes, indeed, Fahad Alam set the tournament alive with a half-century that he got in the first game against DHA Dabanggs. He'll be looking to continue and carry on with that form as well. So is the captain Asad, who had no hesitation in deciding to bat first as soon as he won the toss because he saw the result of the previous game tonight. He must have thought that chasing has been proven to be a little difficult in this tournament. Yeah, Zishan, it's been always a tough job batting in the 4th innings because this is different sort of format where you have to play in 2 innings. Fahad Alam, the big fellow. No surprise, he's opening the batting. And there he is, his partner Asad Shah. He's the captain himself. Yeah, both these are a very strong. It's a very strong opening pair for Clifton Popular. And one thing has been pretty made clear from the result of the previous game that even if you can concede a lead of 40 runs after the first innings, you can still make a comeback. And So here we are, the umpires are ready, players are ready, and the umpire says, let's play. Rishad Afridi is going to start the proceedings. Picked up 7 wickets the other night against Johor Jawans. Starts off with a short delivery that has been put away on the leg side. There is a fielder out there. They'll just get a single to get off the mark with. Yeah, we'll be feeling good, will we? Fahad, he's got his bat to the ball. Always a nice feeling earlier on when you get off the mark, though it wasn't in a convincing fashion because he would have liked to get more out of that stroke because didn't catch it in the middle of the bat. But still, I would say it's good for him that he has rotated the strike, and now skipper Asad Shah is going to be on strike. Rishad Afridi picked up 7 wickets in the first game against the Johor Jawans, and the fact that modern day cricket has totally become a batter's game. Bowling performance, especially that one from Majid Gholi earlier tonight, picking up 5 for. And there you go. This time it's Asad Shah who has taken serious bit of punishment of that delivery. He has really given serious punishment to that shorter pitch length by the bowler, and it's been hooked away. Yeah, he did not need a sighter. It was well over his head high, but look at how well he connected that. The key part about that shot was that he kept his eyes on the ball till the last moment. And that was not a small 6. It went clearly into the stand. So what a way to get up the mark with by the captain. Definitely the bowlers do not like to get hit away for 6s. This time it was too wide, not interested. Umpire calls it wide too. So the shot before, that hook shot,
if you ask any coach in the world, they will tell you to just avoid that delivery or duck underneath because it was almost going above his head. But these type of players like Asad Shah are fully prepared to take the bowling on. Yeah, definitely. We saw Khurram Chakwal getting out in fact, in the previous match when he was looking to hook the ball away and ended up giving an easy catch to the wicket-keeper. But no half-edgers from Asad Shah. Another short pitch delivery that has been nailed on the leg side. That's going to be another 6. Well, well, well. This is not the length to bowl to somebody like Asad Shah. Short, belted for the maximum over mid-wicket. Well in front of square. Yeah, relatively easier ball to hit because the ball did not bounce as the previous one. Once again, got to him at a very good height and he had, once again, no hesitation in keeping the ball down. 2 maximums to start his innings. And there you go, Nawabs already in a conference meeting. That shows what those blows have done to them. Very early days, we are only into the first over of this innings. 2 maximums by the captain Asad Shah of just 2 deliveries that he has faced is really put the opposition on the back foot. Just get the feeling he is going to be looking to try a fuller delivery now, fuller length delivery, and the batter should be waiting for it because he knows the bowler is not going to drop it short now. Because if he's going to do that, he's going to once again get disappeared on the leg side. It's all happening. Losing his run up there. And mind you, Shah Afridi is the bowler who picked up 7 wickets in the last game he played. And he is already under the pump here. Not every day is a Sunday, Falak. This time it's in the air. It smiles in the air. Somebody getting underneath it. But no one is there actually. It's gone in the gap for 4. Well, it was a top edge, but it's good nevertheless for the batting's perspective. Yeah, I was waiting to check the umpire signal. It has been given as a no ball because once again the ball went way over the head high. He got a 6 of the first ball, now got a boundary. And to solve to the wounds, he's going to get a free hit as well. I don't know what he was trying to achieve was Afridi there because he doesn't have a man back on the boundary. Fine leg is inside the circle, even square leg is inside the circle. So it's a pretty wrong length. He's getting serious bit of punishment because of his poor length, I would say. Well, he got hit for 2 maximums, and they had a conversation between the captain and the players and the bowler. He still bowled a short one. Yeah, that's better line. It was attempted slow delivery. Mind you, it was a free hit. So did well to get away from the batter's approach there. Tell you what, he's very lucky to get away with that because once again it was there to be hit, and since it was a free hit, all he needed to do was to connect the ball, Asad Shah. But they have made their intentions pretty clear, Clifton Popular. Well, after winning the toss and opting to bat first, intentions are always clear. Look at that. This is not going to help his cause. Poor line, poor length, and pays the price every time. Now, he's going the journey and he doesn't have any idea where to bowl to. Yeah, he has taken a field at a deep square leg, but the fine leg is inside. It's a vacant area behind square on the leg side, and still he's trying to bowl it short on the body. And he is being punished on every delivery. Still, he's not learning. Not learning from the mistakes that he is committing is Afridi, Rashad Afridi. So every day is a new day. You're right, Zishan. He picked up 4 for 7 the other night, has already given away 27 runs in this opening over. We have seen 4 towering 6s by the captain on the leg side. Oh, good delivery. Why doesn't he bowl that line predominantly? Ends the over with the dot though, but it was an expensive one. 27 without loss of wicket after first over. There you go. This telecast has been watched worldwide through Willow TV. You can watch in Canada, in America, Sahara, Geo Super.
You can watch wherever you are across the globe. In Africa. It's just the third edition of UBL Amin KTPL Season 3, and it's being televised in more than 84 countries. It's an achievement of sorts. And if we talk about the sponsors who have made this tournament possible, it's Top Link, Royal Graphics, Bombay Lighthouse, Clock Tower as well, a wonderful restaurant that is based in Defence, OK Events. We're going to continue with the list after this over. It's Sehram who is going to start the second over for North Nawabs. Yeah, bowled well last night has Sehram. Look at that. Lost his run up there. And it will be a huge responsibility on Sehram's shoulders to come back with a very good over, because his partner went the journey. JDC, there you are, a few of the sponsors. Gore Group of Companies, Popular. Dalfa, let's go together. And let's go together, says Fahad to Sehram. Wow. In the arc and away it went. A country mile. Yeah, it was a slower delivery, but once again, poor line onto the pads, and he dismissed the ball out of its size there, Fahad. It's a pickup shot. And he's a tall batter. That was the perfect length he was waiting for. Had no half measures in keeping the ball down, and once again, it has gone way over the boundary ropes. Well, I tell you one thing, Zishan, they're good friends of each other, but in cricket, there is no mercy. You have to play for your side. And Sehram Kaka already under the pump. Not an easy job to come back when you are getting hit for the six of the very first delivery of your spell. And not a good start for North Nawabs. Yes, they lost it all, but they should have been ready. They should have been expecting this onslaught, but might be given as a wide once again outside the off stump this time. They have completely lost control over their line and length, both these fast bowlers. Overcompensating on that occasion, Sehram trying to stay away from the reach of the big right-hander Fahad and bowling a big wide outside the off stump. Needs to come back. Maybe a Yorker will be a better idea. He drops his another shot, this time over, long gone. That's a flat hit. Well, they're just dealing in maximum so far, both these openers. Well, he's a big man with a big bat in his hands, and he's letting his bat do the talking tonight. Length was there, line was there, and oh, you betcha, it's Fahad for you. Well, both these openers have come out in a very destructive mood. Just get the feeling they did not have the dinner. They're having it on the field. What about the bowlers? It's the opposite number. It's short, it's pulled. See you later. He says it to the ball. That's the third of the over. Yeah, the length was slightly short, and it's typical of Fahad. He likes them there. He's a tall fellow. He's got a very good reach. And have a look at that for a swing of the bat. He's hitting them a country mile, I would say. He's hitting them very big. He's a big lad. It's almost identical to the previous one as well, because the length was short. The ball was angling away from the right-hander. That gave him the room to free his arms. And Fahad, in a mood that he is in tonight, he is not going to miss out. This time he whips it, and whips it handsomely. There is a protection for Sehram. 47 already, and we are only into the second over, would you believe? Yeah, we have seen some magnificent performances from the batters. This surely tops it all. 48 for no loss. They are still in the second over. We have seen the brilliance of Taimur Mirza so far in this tournament. Fahad also living up to the reputation. This time carved away on the outside. It's into the gap. That's going to go all the way for 4. My goodness, how well has he timed that? Well, that is a shot you want to see in cricket matches, cricket ball matches, I would say. Through the covers, it's not Babar Azam, it's Fahad Alam. Yes, indeed, it was pitched up outside the ocean. This time, full extension of the arms, and he knew the fielder at mid-off was inside. So there was a big gap to be found, and he did that comfortably. 50 also comes up for Clifton Populars.
with 1 ball still remaining in the second over. And that ball too has been sent into those trees, I would say. Oh, what a strike. What a way to end the over. 59 after 2 overs. The bowling side are going all over the place. 27 of the first over, 32 of the next. They're running out of options, North Nawabs. They definitely were not expecting that sort of a start. But this is what you get when you are up against a champion side, Clifton Popular. They are 59 without a wicket after the first 2. Look at that, youngest fan of Clifton Populars would be enjoying 6s in the last over from Fahad's bat. Fahad definitely living to his reputation. He's doing all the justice that he can to his reputation, hitting 6s at will. And the bowler, when you are, in that type of mood, the bowlers are short of options. That is for sure. He doesn't know he has to bowl short, he has to bowl full, he has to stay away from the reach, he has to bowl straight. Wherever he's going to bowl, he's going to go the journey, because he's in that sort of mood. As we see, Pathan has the responsibility to bowl the 3rd over. What must be going through his mind? He has seen 2 bowlers being dispatched out of the ground on many occasions in the first 2 overs. What can he do different? What can he bring to the table for North Nawabs? I would say for his good luck, it's going to be Asad Shah on strike, not Fahad. And it will be a good idea for somebody like Asif, the bowler, to keep Asad Shah for the majority of this over on strike. Otherwise, we all know if Fahad comes back on strike, he is going to not really hold back 1 iota. Asif clearly has more pace than the previous 2 bowlers, and he has also opted to come around the wicket to bowl across the right-hander. So he might be looking to create a difficult angle for both these right-handers. But so far, Clifton Popular have been on top of the game. Nicely bowled in the block hole. Whipped away for a single. And this is the thing he would never want to have. Fahad is going to be on strike up against Asif Pathan. Will be interesting to see how he goes. Yeah, so far so good for Asif. And that's where the extra pace is being utilized by the fast bowler. It was in the block hole. It was hard to hit. All he managed to do was to get a single. But Fahad is now on strike, and we can expect anything from him. Boom shakalaka! Over mid-wicket. Unstoppable Fahad. 37 of 8 for Fahad. There is no stopping him tonight, that is for sure. Once again, it was there in the length, and he had just one direction to hit it. That is way over the stands on the leg side. That reminds me of great Shahid Afridi. That blow goes downtown, goes hard, but there is protection. He must be thinking that he missed out, because once again the length was there. It was in the slot. He just tried to hit it a little too hard all across the top, but my goodness, what a start this has been from Clifton Populars. Well, I tell you one thing, Zishan, for a taller fellow like Fahad, it's not every time that easy to get underneath the ball. But he does, but this time it's Asad, it's the captain, gets a full toss and sends it way back into the stands, into the members. That's about 30 rows back. Unbelievable hitting. Well, there is a movie theatre outside the stadium, but the box office stuff is happening here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. Talk about dominance, this from the opener. It's the captain this time who once again dismisses the full toss out of his sides. Talk about the movies, and these are the actors who write their own script, both of them. There you go. That's the end of the over. 3 done, and it's 73 for none, would you believe? And with that, we have a change the voices here, and it's going to be Danish Anis and Naseem Rajput. Thank you very much, Falak Shagaf, Awaz Wale Falak Sher, and
जीशान बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश क्या बैटिंग हो रही है, 3 ओवर 73 रन। फहद मियां चुन्नू और असद शाह 360, कम ऑन, जबरदस्त बैटिंग। टेप बॉल क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है नसीम राजपूत, और ऐसे कई मौके आपको मिलेंगे जहां स्कोर लाइन कुछ सिमिलर सी होगी। आज आपको जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्लिफ्टन पॉपुलर्स के प्लेयर्स फहद मियां चुन्नू और असद शाह। और ये पोलो एंड बेसिक ये सारे स्पॉन्सर्स, पीपल पाकिस्तान, यूबीएल अमीन टाइटल स्पॉन्सर, स्ट्रीट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, KTPL सीजन 3 sponsored by UBL Amin and Badar Expo Solutions is the patron body, and Jio Super covering this event, FHM Pakistan. फहद मियां चुन्नू सैफुल्लाह का सामना करेंगे। क्या बात है फहद की, बड़े बड़े छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं अभी तक। एक मरतबा फिर बड़ी हिट मारने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। इस तरह 2 रन का और इजाफा क्लिफ्टन पॉपुलर के स्कोर में। पर इससे पहले जो मैच हमने देखा नसीम राजपूत, वो इस बात की गवाही है कि 120-130 भी कोई टीम बना ले तो ये बात यकीनी नहीं होती कि जीत उसी के नाम होगी। दोनों ही इनिंग्स में अच्छा खेलना होगा, मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। बड़े बड़े बैटर्स हमने देखा कि डीएचए दबंग के नाकाम हो गए, 40 से ज्यादा रन की लीड लेने के बावजूद वो मैच लूज कर गए। दैट इज KTPL। काफी हद तक का दंग नजर आए दबंग के प्लेयर्स, बट इस बार आपको जो क्लिफ्टन पॉपुलर्स की परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पिछले मैच में शिकस्त हुई थी इनको, और इस मैच में ऐसा लगता है उसका पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं। बड़ा क्लोज मैच हारे थे डीएचए दबंग से, और हाई स्कोरिंग मैच था इस इवेंट का। जो यूबीएल अमीन KTPL सीजन 3 का ओपनिंग मैच था, जबरदस्त मुकाबला हुआ था और वहीं से एक हाइप क्रिएट हुई थी सीजन 3 की। सशा बड़ी हिट लगाने गए थे, कामयाब नहीं हुए। सैफुल्लाह ने अब तक दोनों गेंदें बड़ी अच्छी जगह पर की हैं। क्या गेम है ये भी नसीम राजपूत। एक दिन एक बॉलर सिर्फ 7 रन के एवज 4 विकेट्स हासिल करता है, दोनों इनिंग्स में मिलाकर 7 विकेट्स हासिल करता है, अगले दिन उसके परखचे उड़ा दिए जाते हैं। बड़ा ट्रिकी गेम है, और 6 ओवर में गो के सेकंड इनिंग में भी ऑप्शन होता है, लेकिन लीड लेने के बाद सेकंड इनिंग का अपना एक प्रेशर होता है, क्योंकि अब आपने मैच फिनिश करना है। और वही चीज हमने कई मरतबा देखी पिछले 2 सीजन में भी, कि प्रॉब्लम कर गई टीमों को। असद शाह 360, ग्राउंड से बाहर फेंका गेंद को, जोरदार छक्का फहद मियां चुन्नू का। इस बार इंतजार किया बॉल का, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी सैफुल्लाह की जानिब से। आप देखें थोड़ा सा पेस को भी चेंज किया था, रुके, बॉल को देखा और उठा के बाहर फेंका। टाइम लेते हैं ये बैटर्स, और इन्हें पता है कि स्लोअर वन या डिसीव करने के लिए कोई इंप्रोवाइजेशन बॉलर करेंगे। इस बार इंप्रोवाइजेशन सैफुल्लाह की बहुत पीछे रह गई थी। फहद थोड़ा सा लाइन को कंपेंसेट करने के लिए शफल कर रहे हैं क्रीज में, काफी डीप खड़े होते हैं अंदर। मुझे तो ताज्जुब होता है टाइम्स नसीम राजपूत के स्टंप्स को क्यों नहीं टकराते हैं इनके पैर। ये वाकई में बहुत, मैंने भी गौर किया पिछले 2 सीजन में, और बिल्कुल स्टंप्स के साथ खड़े होते हैं, खासकर यॉर्कर लेंथ को ये जो पिक करते हैं। इसीलिए मैंने पूछा इनके बैटर से, तो कहा कि यॉर्कर लेंथ पिक करनी है। असद शाह, इस बार फहद मियां चुन्नू एक मरतबा फिर गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, 4 रन का इजाफा। क्लिफ्टन पॉपुलर की बैटिंग धुएंधार अंदाज से जारी। दानिश अनीस, शायद मेरी बात का जवाब दिया यहाँ पर फहद मियां चुन्नू ने, क्योंकि इससे पहले यही करना चाह रहे थे। इस बार रिपीट किया उसी शॉट को और बिलाखिर कनेक्ट करने में कामयाब हुए। फाइनल की जानिब 4 रन हासिल किए, सिर्फ एक गेंद रह गई है चौथे ओवर के अख्ताम में। 87 रन ऑलरेडी बना लिए हैं यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने। FMC 49 ऑफ जस्ट 13 बॉल्स, इस बार अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए FMC। फहद मियां चुन्नू वेरी वेल प्लेड ऑन जस्ट 14 बॉल्स। दानिश अनीस, इस टूर्नामेंट में हमने बड़ी बड़ी निफ सेंचुरियां देखी हैं। 4 ओवर्स के बाद 88 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं।
और ये यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग 84 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त नशर की जा रही है, जहां आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ भी जा रही है, इजिप्ट, इसके साथ साथ कई और ममालिक में आप देख सकते हैं अफ्रीका, XP, MBC, विलो टीवी, सब सहारा, सहारा टीवी एंड जियो सुपर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। 84 ममालिक में ये नशरियात बराह रास्त नशर की जा रही हैं। याद रहे, टेप बॉल हो रहा है ये पाकिस्तान के शहर कराची में, जो दुनिया भर में देखा जा रहा है। एक ज़माना हमारा था कि हार्ड बॉल क्रिकेट के बड़े बड़े इवेंट्स भी टेलीवाइज नहीं होते थे नसीम राजपूत। टेलीवाइज की वजह से खासकर ऑथेंटिसिटी लाने में, मेरिट लाने में बहुत मदद मिली है। जब आप सामने खेल रहे होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में राय भी बनना शुरू हो जाती है, और वो टेलीविज़न ने बहुत चीज़ें आसान की हैं। यही वजह है कि टेप बॉल के ये स्टार्स गांव देहातों से, पाकिस्तान की सड़कों से अब दुनिया भर में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है, और एक पहचान बना चुके हैं। और इस बार ऑन साइड की जाने बड़े हिट लगाने गए थे FMC, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1 रन बहलार उन्होंने हासिल किया। दानिश, इनमें से मोस्टली प्लेयर जैसे एक इवेंट दुबई में चल रहा है। असद शाह की मैं बात करूं तो सुबह की फ्लाइट लेकर आए, एक मैच वहाँ खेलते हैं, एक मैच यहाँ खेलते हैं। अब आप अंदाजा करें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि लाहौर गए थे, वो दुबई से खेल के आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स अभी भी UAE में मौजूद है और वो अगले स्टेज में इस टूर्नामेंट में अपनी टीम्स को ज्वाइन करेंगे। सो इट्स जस्ट गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। 360 असद शाह, ओए हुए ऑन द टोज, जबरदस्त हिट, 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है नसीम, ये एक बहुत ही गैर मामूली शॉट है। नॉर्मल इंसान ऐसा शॉट नहीं खेल सकता। जड़ में बॉल आई और उसको जड़ से निकालकर सिर्फ कलाइयों की मदद से, आप देखें, गैर मामूली स्ट्रोक था ये मैक्सवेल को खेलते हुए देखा था हमने अफगानिस्तान के खिलाफ, अपनी जगह पे खड़े खड़े उन्होंने जो हिटिंग की थी, और ये टेप बॉल में आपको अक्सर दिखाई देगी। जी, यहां पर तो मामूल की बात है। असद शाह, एक और जोरदार हिट असद की, बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का क्लिफ्टन पॉपुलर का, डगआउट खुश। ऐसा लग रहा था कि आसिफ पठान का ये गेंद को चढ़ गया है असद शाह पर, सही टाइम नहीं किया था उन्होंने, उसके बावजूद बॉल कितना दूर गया। आप देखें नसीम, शानदार स्ट्रोक मेकिंग इस वक्त असद शाह की जानिब से। दोनों ओपनर्स इस वक्त खतरे की घंटी बजा चुके हैं नॉर्थ नवाब के लिए। इस बार जहां हिट करने गए थे वहां नहीं गई बॉल, फिर भी छक्का। लेकिन इस बार जहां हिट करने गए थे वहीं हिट किया गेंद को, और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और जोरदार छक्का 360 असद शाह का। क्या शानदार शॉट खेला है इस बार असद शाह ने। ये ज्यादा ऑर्थोडॉक्स शॉट था, फुल टॉस डिलीवरी थी, उसको कवर के ऊपर से ही उठा के फेंका, फ्लैट 6। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं यहां पर असद शाह। कैप्टन नॉक खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, जीत की अशद जरूरत। याद रहे, ये दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, तो आज पहली जीत की तगदौ में नजर आ रही हैं। फुल टॉस गेंद, और जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ही किया असद शाह ने। एक और जोरदार छक्का, अंपायर देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहां से ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। दानिश, अगर इस लाइन पर फुल टॉस होगी तो असद शाह जितना सेटल नजर आ रहे हैं वो बख्शने वाले नहीं है, चाहे जितनी भी पेस हो आपकी। यहां अंपायर चेक कर रहे हैं कि बॉल, जी बिल्कुल, बाउंड्री लाइन क्रॉस की और 6 रन हासिल किए यहां पर असद शाह ने। इस वक्त असद शाह और फाद मियां चुन्नू का बैट रन उगलता हुआ। तीन छक्के, एक चौका ऑलरेडी सैफुल्लाह के, आसिफ के ओवर में लग चुका। असद शाह अपनी निफ सेंचुरी 15 गेंदों पे मुकम्मल कर चुके। 14 गेंदों पे फाद मियां चुन्नू ने मुकम्मल की। एक और जोरदार हिट, असद शाह इन फुल फ्लो। एक और जोरदार छक्का, कैप्टन क्लिफ्टन पॉपुलर 360 का। छोटे बॉल लेके आओ। वो जमाना भी याद होगा आपको नसीम राजपूत, जब
एक बॉल खरीदी जाती थी और पूरे मोहल्ले से पैसे जमा किए जाते थे कि बॉल लेनी है। टेप का चंदा अलहदा होता था दानिश, ये सब चीज़ें गुजरी हैं और अब इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। काश उस जमाने में भी ओसाका क्रिको जैसा स्पॉन्सर होता और यूबीएल अमीन जैसा स्पॉन्सर होता। जितने स्पॉन्सर्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 117 5 ओवर में मुकम्मल कर लिए यहाँ और ये डग आउट में खुशी दिखाई दे रही है इस वक्त, चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। क्लिफ्टन पॉपुलर्स के सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं, लगता है जितनी खुशी है उनके चेहरों पर। राइट वाले तो नहीं लग रहे हैं, वो कम हंस रहे हैं थोड़े जबरदस्ती हंसते हुए नजर आ रहे हैं। मिलके तो नहीं बैठे हुए, नॉर्थ नवाब के भी साथ बैठे हो। सैफुल्लाह बॉलिंग के लिए आए, पहले ओवर में 14 रन दिए थे सैफुल्लाह ने। उनकी ऑल आइज ऑन सैफुल्लाह क्योंकि ऑलरेडी रन बहुत हो चुके हैं। फहद मियां चुन्नू बिल्कुल स्टंप्स के साथ खड़े हैं। एक और जबरदस्त हिट, फहद मियां चुन्नू, एक और छक्का। दानिश अनीस, क्या हो रहा है यहाँ पर नसीम राजपूत? छक्के ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। इन दोनों के लिए तो ऐसा लगता है कोई मसला वाकई में नहीं है। स्पॉट में था ये फहद मियां चुन्नू के लिए, जो बैकफुट पर गए और उठाकर फेंकी बॉल। डॉट बॉल हो जाए तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा कारनामा हो गया इस इनिंग में, लेकिन ये भी वाइड बॉल। वैसे बड़ी क्लोज थी दानिश। बिल्कुल अनलकी रहे यहाँ पर सैफुल्लाह, खुश नहीं है अंपायर के इस फैसले से, बट आपकी चल नहीं रही होती तो एक नहीं चल रही थी। जब बुराई आती है तो फिर हर चीज ही आपके खिलाफ जा रही होती है और ऐसा दिखाई दिया सैफुल्लाह के। बहुत क्लोज कॉल थी है। आखिरी ओवर है ये क्लिफ्टन पॉपुलर्स की इनिंग्स का। देखना होगा कितना टोटल बनाते हैं यहाँ पर और फिर क्या जवाब मिलता है उनको नॉर्थ नवाब्स की जानिब से। फहद मियां चुन्नू इस बार सामने की जानिब खेले, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल किए एफएमसी ने और क्लिफ्टन पॉपुलर ने। एक मेथड नजर आता है फहद मियां चुन्नू की बैटिंग में। शफल करते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं, बॉल की लाइन में आते हैं और जहां बॉल होता है वहीं मारते हैं। स्लॉक करते हुए कम नजर आए अभी तक आपको ये नसीम। आप देखिए जहां का बॉल होता है वहीं मेरिट पर खेलते हैं और सही कनेक्शन हासिल करते हैं दोनों बैटर्स। अगर आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है दानिश अनीस के, दोनों को आप देखेंगे तो फिर मेरिट पे शॉट्स खेल रहे हैं। अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे तो वहां बड़ी हिट लगाते हैं। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल करने में जरूर कामयाब होंगे और ऑलरेडी बोर्ड पर 130 रन हो चुके हैं। इस बार सही तरह टाइम नहीं कर पाए और इसका क्रेडिट आपको सैफुल्लाह को देना होगा क्योंकि एक ग्रंट सुनाई दी जब वो बॉल करा रहे थे। शीशे के इस पार भी हमें उनकी वो चीख सुनाई दी, यानी कि थोड़ी ज़्यादा जान लगाई थी। एफर्ट बॉल था जिसकी वजह से फहद मियां चुन्नू उसको सही तरह टाइम नहीं कर पाए। असद की कोशिश इस बार अच्छी बॉलिंग सैफुल्लाह की, ज़रा जगह पे गेंद की और थोड़ा सा अपने पेस से डिसीव किया बैटर्स को और इसकी बहुत ज़रूरत भी दिखाई दे रही थी। और ये यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा की साहबजादी और उनकी अहलिया भाभी हमारी बैठी हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हुई हैं और क्रिकेटर्स के साथ साथ मेंटोर्स के साथ साथ कोचेस के साथ साथ आम आवाम भी यहाँ पर आई हुई है और इन मैचेस को एंजॉय कर रही है नसीम। एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का असद शाह का। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ये है 360 के चारों जानिब ग्राउंड के स्ट्रोक्स खेलते हैं। आप देखिए कितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं फहद मियां चुन्नू। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, रूम अवेलेबल था, शॉर्ट डिलीवरी थी और बिल्कुल पूरा मार्जिन मिला यहां पर फहद मियां चुन्नू को, लेकिन कनेक्शन हासिल किया उन्होंने। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और इस बार एक और शानदार स्ट्रोक फहद मियां चुन्नू का। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की गई और यूबीएल अमीन सीजन 3 का सबसे बड़ा स्कोर क्लिफ्टन पॉपुलर अब तक करने में कामयाब हुए। 141 फॉर नो लॉस।
कमाल बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर्स के ओपनर्स की जानिब से। फहद मियां चुन्नू 20 गेंदों पर 72 रन, असद शाह सिर्फ 17 गेंदों पर 58 रन, 141 रन बनाए। यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 6 ओवर्स में पहली इनिंग्स में ये स्कोर है, जिसका खसारा पूरा करना होगा नॉर्थ नवाब्स को। आज पहली ही बॉल से फुर्ती दिखानी होगी, नवाबी नहीं चलेगी। यहाँ नवाबों का काम नहीं रहा है। अब आपको नॉर्थ नाजमाबाद के क्रिकेटर बनना पड़ेगा। नॉर्थ नवाब को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। और ये बैटिंग आप देख सकते हैं, फहद मियां चुन्नू का ये हिट और इस बार असद शाह की हिट। मरतबा फिर असद शाह की जोरदार हिट। यहाँ ऑन साइड की जाने फहद मियां चुन्नू का खूबसूरत स्ट्रोक। एक और फहद मियां चुन्नू का छक्का यहाँ पर। बहुत ही शानदार बैटिंग है, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। जोरदार बैटिंग असद शाह की और ये फहद मियां चुन्नू, दोनों ने आज खूब हाथ खोले। इस बार फहद मियां चुन्नू ऑन साइड पे जोरदार स्ट्रोक छक्का और ये फ्लिक किया ऑन द टोज, जबरदस्त स्ट्रोक। इस बार सामने की जानिब, वो कि टाइम नहीं कर सके लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का असद शाह का। ये ऑन साइड पे हिट लगाई असद शाह ने और एक और हिट असद शाह की 6 रन के लिए है, बहुत। और ये एक्स्ट्रा कवर पर फहद मियां चुन्नू का खूबसूरत स्ट्रोक, एक और शानदार स्ट्रोक के कवर पे। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। इस तरीके से एक फॉर्मिडेबल टोटल देने में जरूर कामयाब हो गए। एक अपहिल टास्क होगा नॉर्थ नवाब के सामने जब वो बैटिंग के लिए आएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 141 फॉर नो लॉस इन 6 ओवर्स, जस्ट 11 एक्स्ट्रास। लेकिन दोनों बैटर्स फहद मियां चुन्नू 72 ऑन 20 balls and Asad Shah 58 on 17. दानिश अनीस, कमाल तो किया है फहद मियां चुन्नू और असद शाह ने अपनी टीम क्लिफ्टन पॉपुलर्स के लिए। बॉलिंग कार्ड आपके सामने आज एक नहीं चली नॉर्थ नवाब्स के बॉलर्स की। इरशाद ने 1 ओवर ही कराया, आज 27 रन दिए। सहराम ने भी 1 ओवर कराया, 32 रन दिए। आसिफ पठान ने अपने 2 ओवर्स में 43 रन दिए, जबकि सैफुल्लाह ने भी 2 ओवर्स कराए और 38 रन दिए। इस तरह 141 रन बनाने में कामयाब हुई क्लिफ्टन पॉपुलर्स की टीम। कमाल कर दिखाया है क्लिफ्टन पॉपुलर्स की टीम ने। अगर नॉर्थ नवाब को ये मैच जीतना है तो दूसरी इनिंग्स में धमाल करना होगा। यहां पर धमाल करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आपको ज्वाइन कर रहे हैं राना शफाक और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Danish Anis. Explosive performance. You can see North Nawab is trailed by 141 runs, and don't forget that without losing a wicket, they got to the score of 141. Asad Shah and Fahad Chunu, they were absolutely unstoppable, and the players of opposition, North Nawab, they just kept watching the carnage. Brilliant shots they played, and played with real dominance. The opening batsmen are making their appearance in the middle, and they have to play in the similar fashion if they want to stay in the competition. And in the com box, I have been joined by Rana Shawk. Welcome. Thank you very much, Farooq. We watched absolute merciless batting from Fahad Mian Channo and also from Asad Shah. They looked absolutely ruthless, they looked absolutely brutal, and they played strokes everywhere in the ground. That was a magnificent sort of a batting. 141 runs out of 6 overs, out of 36 balls. You can imagine how quickly they batted. Thankfully, this innings is based on 6 overs. Otherwise, they would have got to 200. Yeah, they would have got to even 250 had it been a 12 overs game. Although it is 12 overs game because they got to play second innings as well. Absolutely frightening stuff from both the batsmen, and the batsmen of North Nawab, they're also capable, but they have to bat out of their skin. The man on screen, Hafiz Pola, he played well in the first game. Yeah, he can hit the ball miles, and he knows what he has to do. He got to play his strokes right from the ball one. A.B. Paro is the other opener. Both are very capable. Both can play big strokes. The long one has been asked to catch straight a little bit. There is mid-off, extra cover, backward point, a slip and leg slip as well. Fahad, who batted outstandingly, now he will bowl the first over. It seems like maybe He's everywhere.
Not only he batted tremendously well, now he's got a ball with him. Let's see what he brings with the ball. Goes for it. What a good blow that is. Into the stands. What a perfect start. His half-pitch bowler has announced his presence. This is exactly what they would have wanted. This is exactly what they would have liked. Hafiz bowler hit that one right out of the meat of his bat, and that one travelled all the way to the mid-wicket boundary for 6. Oh, have a look at that one. Full swing of bat. Goes for it, pulled away. Has bitten the man, could be a boundary. It is a boundary. That's the start they were looking for. Well played. They started their innings from exactly where the other side left. Big strokes continuing here in DHA Sports Club Moin Khan Academy. They're looking unstoppable, the batters. They know this field restriction will be lifted after 2 overs, so they have to make most of this opportunity. 10 runs of the first 2 balls. It's Farhad, the left armer. Oh, has been deceived. He has been deceived clearly. He was too early onto the shot. And it's a dot ball. Yeah, I think he swung his bat bit too early. Ball came a bit. Bowler held that one back a little bit. And batsman went for the big one. He was trying to play that one onto the onside. Hafiz bowler has 10. He could be a dangerous customer because he knows every tricks of the trade and he can play either sides of the wicket. Well, change of pace is very important after conceding boundary and 6. He goes for it. It's high in the air. He has been deceived. Will this be taken? 3 men are converging. And dropped. It was on the cards. Yes, it was on the cards because he was swinging his bat at everything. We saw some good catches being taken in the first match, but not this time around. His feet were not moving at all. Bowler also slowed it down. He bowled that one back of the hand, and look at that. Did come under the ball. Ball did come into his hand and then popped out. He goes for it. That's the connection. He loved it. What a shot that is. Hafiz bowler is off to a flyer here. He said to the bowler or to the fielder, if you drop me, I will do that. Off the back foot, pivoted a bit, and then hit that one miles. Where the tea stall is, I think it dropped somewhere where the tea stall is. He goes for it. Just short of the fielder. Single taken. This is the kind of player who can make the bowler pay if he's dropped. So exciting first over has come to a close now. 19 for none. North Nawab. So this tournament is can be watched in different parts of the world. It's going in on more than 80 channels, 84 plus channels. Sub-Sahara, Willow TV, Geo in Pakistan, and a number of social media platforms. You can catch the live action of this KTPL Season 3. Pictures are coming live from DHS Sports Club Moin Khan Academy, Karachi. Beautiful ground in a beautiful city. A lot of sponsors have given us the sponsorship, and we are very grateful to all the sponsors, and you can see them on your screen at the moment. 19 runs came off the first over. Hafiz bowler has scored all the runs and he has taken all the strike because AB Paro hasn't taken a strike as yet. Irfan is the one who will start the fresh over. Irfan Nana from the pavilion end. Full toss, smashed hard and flat. It doesn't hurt much. We have come across to many interesting names, and this is one of them. Nana. Why is called Nana? No, I think I don't think even he has got married or not. MNP Dell Technologies
Sin Police. These are the group, Sama Group, one of the sponsors as well, JDC Foundation. We are so grateful to them. Gohar Group of companies. These are the companies which are right behind this competition. This UBL Amin KTPL Season 3 is in full gear. Plenty of excitement we have seen. There is some changes in the outfield. Maybe he's complaining for something. This AB Power will be on strike for the first time now. It's all set once again. He goes for it. This player along the ground. That should be cut off. And coming back for the second. Could be tied at the bowler's end. Throw is not strong enough. So 3 runs off the first 2 balls. And so it's a decent start for the bowler. Indeed. Even if a bowler concedes 5 or 6 runs in first 2 balls, it should be called a decent start. Because 141, what they have scored when they were batting, a bowler can give 18, 15 runs without any problem. Spanked away to the offside. He has got the elevation and has found the boundary. Lovely shot. Width was given and he pounced on that one. There you see it again. It pitched fairly back. That was a half tracker and he put that away and put that away tremendously well through the offside. Irfan has to be disciplined. He has to bowl within the stumps. Anything outside the off stump will be punished, especially the first 2 overs. He knows he made a mistake. It was a half tracker outside the off stump, and what else the batsman wanted? AB Paro has picked up his first boundary, 7 of the over so far. Big full toss. He smoked it. He smoked it hard over the rope for 6 more. Oh, look at him. Look at him. He's absolutely jubilant. And he's showing some aggression as well. Oh, man. Bowler made a mistake or made a cardinal sin, I would say. First he bowled a half tracker, then a full toss. Oh, mine. Hit me ball. It was back of hand delivery, went horribly wrong and well picked up by the batsman, AB Paro. He joins the party. Missed it altogether. A precious dot ball from Irfan. I liked the enthusiasm of this man. Oh, he's enjoying it. He's having a good time out there. Wow. Oh, my God. He's expecting boundaries on every ball. And he knows it's a Mount Everest his side has to climb. They're 109 runs behind. Full toss, missed it again. Back-to-back dot balls. What a finish from Irfan. 2 gone, 32 for none. Irfan bowled a couple of good balls to end the over. And he made sort of a good comeback. They're still trailing by 109 runs with only 24 deliveries to be bowled in their innings. Hafiz Bowler has 20, Paro has 12. 32 run isn't a bad score at all in 2 overs. But because they are in reply of 141, that's why it looks a bit modest. Absolutely. The way Asad Shah and Fahad batted, they set the high standard and they have to follow the positions. These 2 batters, and still he's praying. He's still busy. Oh my God. He's a very innocent boy. Beautiful one as well. And he's really, really showing some enthusiasm. He looks pretty enthusiastic and looks very humble as well. The way he's praying. Good to see him. So 8 overs have been bowled and we haven't seen any wicket fall. That's it interesting. Have you seen it before? And we saw 8 wickets falling in the last innings of the last match, where DHA Dabanggs struggled, tottered, and at the end they lost the game as well.
It's high, it's handsome. What a good strike. What a tremendous strike. My word, that is enormous. One of the biggest sixes of the tournament. He had an absolutely massive mow at that one. Wow, short yard. He camped onto the back foot and then backed himself with a massive hit. And look at that! Oh, I have done it! I have done it! That's what he said. Oh. That's a signature style to celebrate. He always hits the bat on the ground hard whenever he gets the maximum. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. It's a huge wicket. Hafiz bowler went for the big shot again. Massive deflection. And wicketkeeper did the rest. Mansoor comes up with the wicket. Hafiz had a real go at that one. Genuine outside edge. And wicketkeeper didn't have to do anything extraordinary. He caught that one gladly. Pola goes for 26, 38 for 1. Nice time to go to Hina. Thank you so much. Second match of the day is being played between North Nawabs and Clifton Populars. But with me on the sidelines is Mohammad Faizan, District Manager UBL Amin. Thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. किस तरह enjoy कर रहे हैं? Well, UBL Amin. मेरे ख्याल से तो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का इवेंट नहीं देखा टेप बॉल का, जिसमें कॉर्पोरेट पीपल्स भी शामिल हैं. यूबीएल अमीन इसको स्पॉन्सर कर रहा है. इसका मेन स्पॉन्सर है. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खैर क्रिकेट के लिए भी और टेप बॉल के लिए भी. और मुझे लगता है कि शायद इवेंट के आखिर में यहीं से कोई प्लेयर निकलेगा जो इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी खेलेगा. और बदर एक्सपो को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि और नज़र आ रहा है कि ये जो सीज़न 3 है इंशाल्लाह और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा प्रीवियस 2 सीजन से. इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा. और जिस तरह आपने कहा कि इसी लीग से एक बड़ा एक सितारा निकलेगा, रिकॉग्नाइज होगा. ये लीग का मकसद ही यही है. मैं भी पॉपुलर की बैटिंग देख रहा था, उसमें एक वो फहाद लड़का बहुत एग्रेसिव खेल रहा था. शानदार. हाँ, और यहाँ पर एक छक्का हुआ. जबरदस्त 6 और 4 हमें देखने को मिल रहे हैं. नो डाउट बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं और प्रोफेशनलिज्म के साथ खेल रहे हैं. अच्छा गेम हो रहा है. और ये मेरे हिसाब से जो है ना, इनको कोई साल में 2-3 लीग्स करानी चाहिए. हाँ, डेफिनेटली क्रिकेट का पैशन इतना है. और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी आगे होके ना इसमें और ज़्यादा बेहतर प्ले करना चाहिए ताकि ये काम चलता रहे. यूबीएल इटसेल्फ क्रिकेट को लेकर कितना पैशनेट है? यूबीएल तो बहुत पैशनेट है. आपने शायद सुना हो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में. और यहाँ पर विकेट गिर गई है. हम व्यूवर्स को बताते हैं बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट जारी है और विकेट्स गिर रहे हैं. आपके पैशन को लेकर हम बात कर रहे हैं. यूबीएल जो है वो इटसेल्फ क्रिकेट को बहुत प्रमोट करता है. आप देखें कि कराची में सबसे पुराना जो ग्राउंड है वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. यूबीएल की अपनी टीम भी है और इसीलिए उसको सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आज यूबीएल यहाँ मौजूद है. Well, definitely. Thank you so much for being on the sidelines. Back to the commentary box. Thank you. Thank you very much, Hina. Shafi Agha, the latest victim, got out. The ball went through his legs as he tried to heave it away. So, a couple of wickets falls in the shorter space of time. That was an amazing bolt. Ball went right through his legs and then disturbed the timber. And timber rattled all over the place. Very rarely we see these kind of dismissal. There is always a small gap between 2 legs, and the ball on that occasion found the gap to rattle the stumps. So back-to-back blows. Hafiz bowler was the first one to go. And then Shafi, and now Yahya Khan at number 4 has come out of the middle. He's also a very capable player. But his side is a little bit in trouble. And Mansoor with 2 wickets under his belt. He goes for it to the outside edge. And it's taken. Wicket number 3 down of the over. What's happening here? Mansoor has been very penetrative and now he's looking very ominous and lethal. He has taken the wicket number 3 in this over. An interesting kind of a over it has been. 6 wicket. And in fact, it was a turn of a 6 by the sequence of this over. But he has taken a wicket. There you see the replay. Fielder was at short third man. He had to cover a little bit of a territory, but he kept his eyes on the ball and took that one very, very nicely. Yahya Khan goes for none and third wicket falls for 44.
44 for 3. North Nawab, they are in trouble. And now Mursalim has come out of the middle. 3 wickets fell in this current over, with a couple of maximum as well. After first 2 wonderful overs, they have lost their way somehow because Mansoor has been quite brilliant. Very accurate and has bowled full, has been rewarded thrice in this over. 1 ball to go. It's a hat-trick ball, don't forget that. He goes for it, swing of the bat. Could be out, gone! It's a hat-trick! It's a hat-trick for Mansoor. What a performance. 4 wickets in the over. Would you believe it? Oh, what we are watching, what we are seeing. We saw runs flying everywhere in the first inning, and we are seeing wicket tumbling like 9 pins here. This was the latest one. Fielder again covered a bit of a territory, kept his eyes right onto the ball, and then took a very good catch. He goes for naught. 4 down for 44. That's the trophy they all are playing for. But at the moment, North Nawab, they're in trouble. They are sliding in this contest. 44 for 4, and time for the change in voices. Zishan Khalid and Falak Sher will pick up the commentary. Thank you, Farooq. As we see Imran Shah making his way to the center to face the music. Mansoor pick up a hat-trick. Very rarely you see Zishan a hat-trick in a tape ball competition. Well, there are so many things I've been watching for the first time in my life in this UBL, KTPL Season 3. Over where he picked up 4 wickets and also managed to pick up a hat-trick. Quite sensational, that stuff from Mansoor. Leaves that safely alone. Starts off with the wide, does Tahir. Tahir is the new coming bowler. He's a very good all-round cricketer. Comes all the way from Islamabad. They've got young fans as well supporting their side. What a contest this has been so far between Clifton Populars and North Nawabs. There you go. Pindi against his name. Tahir Pindi. He's got some good pace as well to work with. And it will be up against A.B. Paro, who's literally batting on 12. Here goes Paro, but doesn't connect as he would have liked. It's only going to be 1. Well, he came out to open the batting, A.B. Paro. So far, he has been the spectator of watching wickets going down at the other end. I may not be aware of all the laws in this KTPL Season 3, but can the fielding side in force follow on? We'll wait and see. When the follow-on will take place, then the law will come into play as well. We haven't seen it happening as yet. They couldn't get any wickets in the first innings of Clifton Popular. Talking about North Nawabs, they have already lost 4. And all of them came in the previous over of Mansoor. Well, still anything can happen. We saw that in the previous game as well, when Malangs managed to score 82 in the last 3 overs. That too when they had conceded a lead of 40. So it's still too early to say anything. A.B. Paro is still out there, and we can expect some fireworks from him tonight as well. Tahir to Imran this time. Nicely bowled, swing and a miss. And Fahad Miachanu has given that extra run. They've scampered through for a bye. An interesting question you made here, Zishan, about the follow-on. Will be interesting to see if that comes into play. How many runs will be for the deficit to enforce the follow-on? It'll be an interesting question, isn't it? Yeah, definitely. We'll have to take out the law books and we'll have to study that before coming in tomorrow. But I still believe North Nawabs are pretty safe because they still have 48 on the board. Although they still trailed by 93, but they still have 2.5 overs remaining. Another wild swing, no connection whatsoever. Good bowling, I would say. Staying away from the reach of Paro. And we haven't seen much of a footwork by most of these batters. They just mean one thing, and that is to just back themselves, stand and deliver.
But there are quite a few who use their feet very intelligently as well, likes of Casey's, for example. He plays technically very proficiently, in my opinion. In the slot over the extra cover, that is going to go straight into the hands of that fielder. Initially it was all about maximum, now they have started to pick up wickets. And the batting line of North Nawabs is falling like a house of cards here. Again, technique coming into play, had to reach for that. It was way away outside the off stump. And he just managed it to get and hit down the throat of extra cover, deep extra cover. Celebrations for the bowler, and it's Paro, the latest exit. He too leaves the arena at the score of just 13. There are 5 wicket downs at the score of 48. So Tahir joins the party as well. He's amongst the wickets as well for Clifton Popular as Zain Pathan walks in at number 7. Oh, nicely bowled again. Look at that. He's been able to bowl the dot balls, and those dot balls have really exerted pressure. Now that boy who was jubilant in a span of couple of overs seems to have gone. He's lost. Looks like his ship has sunk. He was jumping all over the place 2 overs ago. Now he's on his feet. Come on, young man. It's not done yet. Still an innings to go. And there you go. It smiles in the air once again. Somebody getting underneath it. And what happened? I think he's pouched it safely. Very good catch in the end. It was just a second delivery over Zain, who missed the previous one when he was beaten by the lack of pace. This time he got so much elevation on the ball. Look at how high that ball went. And we have been seeing few drop catches as well in this tournament. But look at how easily and comfortably he held on to that. They were reverse curve style, the Australian style of taking that catch, proving to be really effective for Clifton Popular. He's going to walk back to the pavilion without even troubling the scorers. And Pathan, it's 48 for 6. So it's Asif Pathan, the new coming batter. There are a lot of Pathans in this competition from all the teams. There is 1 or 2 Pathans. I get the feeling. Left arm out to the left-hander. Play and a miss will be adjudicated as wide. Well, yes, indeed, you need the strength of Pathan to go near to that score, which Clifton Popular posted in the first innings. 50 is raised with that wide outside the off stump. But not before they have lost 6 wickets in North Nawabs, and they have got plenty of work to be done. Talking about Pathans, a lot of Pathans representing Pakistan at the international circuit. In the national side, Mohammad Rizwan, Shaheen Shah Afridi, Fakhar Zaman. There are quite a few Pathans in Pakistan national side of late. At the moment, it's going to be Asif on strike to face Mansoor, who was just unplayable in his first over. Took 4 wickets. Would you believe that? Yeah, can the tail wag here for North Nawabs? They're still trailing by plenty of runs, 90 to be specific. Can we witness another fifer tonight? We saw MG picking up a fifer in the previous game against DHA Dabanggs.
Can it turn out to be a bowler's night altogether? Yeah, the fifer is definitely on the cards. And he's got 4 deliveries left. Has every chance of picking up another. Swung away on the leg side. It's in the air. And it's way past the fielder at square leg. That's going to run away for 4. They needed that. In fact, they need plenty of those. Now, North Nawabs. Yeah, something to cheer for Nawabs, as that ball was there for the taking, and he has really swiveled it up for 4 down to square leg boundary. People of every age are here, present in this ground, in this Moin Khan Cricket Academy. And how about that? It's long. And where is it going? It's going out of the ground. What a stroke that is, Zishan. That's the power of Pathan. Not many would have been able to hit that ball on death length that far outside the boundary ropes. It was almost a pinpoint Yorker. And look at that bat swing. Look at the strength of his hands. Tell you what, that went a mile. And full toss has been belted into the members. Wow! If you get that sort of stuff, no matter you're Mansoor, no matter you have taken 4 wickets in the first over, you're going to go that long. Yeah, just losing his shape, just losing his line and length in this over, Mansoor, and he's paying the price for it. 2 back-to-back maximums to Asif Pathan. Can he be the hero for North Nawabs? Well, I still tell you, there's still an innings remaining. He can still bring his side closer to that total. That's in the air again. How far is it that? I think it's 1 bounce 4. Or has it carried all the way? It's gone all the way. 3 sixes of 3 deliveries. What a way to finish the over. There is a late onslaught here from the batting side. 5 done. It's 73 for 6. Yeah, this time it was the length and he was sitting way back inside the crease. So that came off to him to a perfect length which he easily, absolutely nailed towards long on. 73 for 6 after 5. Still trailing by 68 runs though. This match, in fact, the whole tournament, KTPL Season 3, is nothing short of pure entertainment. And entertainment we are getting in different fashions every night. This is the beauty of tape ball. And especially when it is, KTPL Season 3. UBL Amin presents KTPL Season 3 in Karachi. It has started with a bang. Indeed. 1 over now remaining. Irfan is going to bowl the last over. Starts off with a low full toss, which wasn't hit away comfortably by the left-hander, but he has done the right thing by giving the strike back to Asif Pathan. Yeah, the right-hander, the dangerous Pathan Asif is going to be on strike. And it will be interesting to see how Irfan goes about the job now. He is one of their main bowlers and he has the ability to bowl those economical spells. He is one of those bowlers across Pakistan who is considered as the economical. Yeah, definitely. Now the fielding side are making some changes to the field. They have placed an extra fielder on the leg side. Now you can see there is a fielder at leg slip and a fielder at fine leg. Pretty square. And that's high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, it falls in no man's land, and they will scamper through for a couple as well. And through, has it hit the bullseye? It has, and they're asked for a referral as well. So it's all happening here. Yeah, good piece of bowling, good piece of fielding. Asif Pathan was clearly not expecting the throw to come at his end. That's why he might not have slided his bat. And as we all know, direct hits are always very dangerous. Yeah, it will be a matter of touch and go. Seems to have survived on this occasion. Yeah, he might have placed his bat inside the crease just before the ball hit the stumps. But to all the youngsters who are watching this live, you need to slide your bat inside the crease. You're not supposed to place it. You need to slide it. High full toss, high in the air. It's taken, but we'll wait for the umpire's decision.
I think it's a no ball. Yeah, it is. We'll have to re-ball, and it's going to be a freebie too. So misdirecting it completely here, Irfan the bowler. Yeah, he was attempting a slower delivery, which went horribly wrong. It was way over the west high. Yes, they got 3 runs for that, North Nawabs, but I don't think they're going to like the end result because the left-hander is now on strike. Oh, swing and a miss. Dot ball. Very precious at this stage because we are only into the last over. 3 balls to go, and they're still trailed by 62 runs, North Nawabs. Yeah, that's the thing for the batting side. They still trail by 62. So no matter how many runs they can score in the last 3 balls, Clifton Popular will still end up having a healthy lead when they will come out to bat in the second innings. Had to reach for that. Plays it towards point and will take a single. And this time it's going to be the right-handed Asif Pathan on strike. So it's a good news for the batting side, but will be interesting to see how they finish. Yeah. And as you mentioned, Zishan, the lead is going to be very healthy. Yeah, Asif Pathan needs to make sure that he gets at least a couple on this ball. Missing his radar on that occasion, the left armer. Down the leg side. Another important 2 runs added to the total. You could see Fahad Mia Chinnu behind the batter. He's looking so relaxed. He might be coming in and enjoy once again in the second innings. That was a belligerent knock in the first innings which he played. Nicely bowled and nicely played, but unfortunately he's picked out the man at the deep mid-off. Another wicket goes down. Yeah, it was a slower delivery. He was waiting for it. There you see. Got underneath to the pitch of the ball, just couldn't get the elevation. It went hard, it went flat, and it went straight into the lap of the fielder at mid-off. Another wicket goes down for North Nawabs. Their 7th of the night. Asif Pathan's cameo comes to an end. 25 of 8 for him tonight. It's 8 down. It's in fact 7 down with 82 runs on the board. So it's Saram, the new coming batter, who is known for his bowling more than his batting, but he can hold the bat. Gets a dot going on to finish the innings. So it's 82 for 7 what they achieve in their 6 overs, which means that the lead is going to be 59 runs. That will take some stopping. Yeah, if you look at the overall score, 82 being scored in 6 overs is not that bad, but the fact that they already conceded so many runs in the first innings, 141, now they have given the opposition a lead of 59 runs, and they will have to start with all guns blazing in the second innings. They cannot afford to leak runs in the second innings. They will be clearly disappointed. They got a good start. Their openers provided them with a very good start, but that over, where they lost 4 wickets. There you see, they started off well, got 2 maximums and a boundary in the very first over. He also got a chance when the catch was not taken. There you see. And Fahad travelled to journey in that first over. The boy was pretty pumped up. Everything was going smooth for North Nawabs until that point. And after that celebration, everything started going wrong. Yeah, that was the moment when they lost it, in my opinion. They kept on losing wickets in regular intervals. A clean bowl through the legs. And this was a miscued one as well. Was easily caught at short third. Another misfire. And another hit attempted through extra cover was taken in the deep. They kept on losing wickets till the very end of their innings. So never got the momentum after the departure of their captain. Couple of lusty blows towards the end of the innings by Pathan, Asad Pathan. And he too was caught in the deep mid-off when he was trying to launch one.
Yeah, it was a brilliant cameo, but it came a little too late. There you see, losing 7 wickets in reply, North Nawabs. Asad Pathan coming out to bat at number 8 was the leading run scorer with 25 of 8. Hafiz Pola also scored 26 of 9, but apart from that, there was nothing much to talk about from the batting's point of view. Well, the bowling have been generally very good. 4 wickets to Mansoor and a couple to Tahir and a wicket for Arfan as well. They've been economical to say the least, considering this format. We'll take a short commercial break, and after that we'll be right back with the second innings of Clifton Popular, who are leading by 59 runs.
Assalamu alaikum and good evening. मेरा नाम कायनात इम्तियाज़ है and with me today is Mr. Faisal Zahid Malik, Chairman and CEO, Pakistan Observer. This has been an incredible tournament so far और हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच होते जा रहे हैं. सर, आपका ये शायद ये सीज़न जो है KTPL सीज़न 3, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि KTPL जो सीज़न 3 है और बदर एक्सपो वालों ने ये माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया है. और एक वो लड़के जो स्ट्रीट बॉयज़ हैं उनको उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कवरेज दी है और 84 ममालिक में ये जा रहा है. और मैं देख के इस वक्त हैरान हो चुका हूँ कि जो एटमॉस्फेयर इन लड़कों को दिया गया है और जो इनका एक्सपोजर है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को भी जोड़ता है और पाकिस्तान की समझें शहर है, मैं इसको कहूँगा कि ये हमें यहाँ पर यूनाइट करता है. तो मैं एक दफ़ा फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ. Zohair Nazir has been working tirelessly इस सीज़न को सक्सेस बनाने के लिए. This is the third season and everybody has been working so well. तीसरा सीज़न है, आप इसके बारे में किस तरीके से आगे देखते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट को हम किस तरह और आगे लेके जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं दोनों जो सीज़न थे 1 और 2 उसमें ज़ोहैर साहब के साथ था. लेकिन इस दफ़ा जो मैंने चेंज देखा, एक तो ग्राउंड बहुत बेहतर है, लाइटिंग सिस्टम अच्छा है, फिर लोग जुड़ते जा रहे हैं. एक समझना कि काफ़िला है, वो काफ़िला रवां है और मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है. तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा 8 टीमें हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो प्लेयर्स आए हैं वो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं. आप समझें जिनको अगर आप सेलेक्ट करें पाकिस्तान टीम के लिए या 16 प्लेयर उनमें से निकालें तो एक से एक आपको इस वक्त ये प्लेयर खेलता हुआ नज़र आएगा. बिल्कुल ऐसा ही है. और सर, जिस तरीके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया को इस वक्त जो 84 प्लस कंट्रीज़ में जाके ये जो हम वाइड दिखा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि हम इस क्रिकेट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? जी, मैं समझता हूँ मैं इस वक्त पाकिस्तान के बिहाफ पे एक बात करना चाहता हूँ कि वो ममालिक जो पाकिस्तान को समझते हैं कि ये दहशत गर्दी की अलामत है या ये बैकवर्ड मुल्क है, वो आज आके ये देखें कि पाकिस्तान का ये रंग एक सकाफ़त का रंग, एक कल्चर का रंग और क्रिकेट का रंग हमें नज़र आता है कि हम किस तरह अपने क्रिकेट को जुनून की हद तक चाहते हैं और इसको हम मज़ीद किस तरह आगे लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. दिस वाज मिस्टर जाहिद. और इसी तरीके की मोटिवेशन और एंथुसियाज्म हमें चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. My name is Kainat Imtiaz and with me today is Well Bao, CEO E-Zone Business Private Limited. He has been with us for a very long time, but this association with E-Zone has been really important for Badar Expo Solutions. Sir, this is your first time witnessing cricket here in Pakistan. How is your experience so far? Yes, I know the game, but the first time I'm here to see the match. Yes, and Badar Expo. Miss Zohair is my friend. He invited me to join there. I'm very happy for this game. I enjoy the moment. Enjoy this time. Zohair Nazir has been working tirelessly to make this event happen, the season 3 of KTPL. What are your thoughts about that? KTPL 3. Yes, I know KTPL before 1 year. Last year KTPL 2, but at that time I did not Pathan. Right now I'm Pathan, so I come here, and so it's a very good game. I know cricket is a very famous game in Pathan. Everyone like it. I also like it. Will you like to play in the next season? Oh, really? Oh, if I can, I will try. Thank you so
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से, जहां पर KTPL सीज़न 3 यानी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का मुकाबला, ये जो लेटेस्ट वन है, ये जारी है। ये दोनों अंपायर्स जो आपकी स्क्रीन पे, उनके हाथों में बड़ी तादाद में बॉल्स हैं। 3 बॉल्स तो मैं देख सकता हूँ एक अंपायर के हाथ में, और 1 बॉल एक अंपायर के हाथ में है। तो 4 नई बॉल्स के साथ वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं, जिनको क्रिको ओसाका टेप के साथ जो है वो टेप किया गया है। ये फील्डिंग साइड आपकी स्क्रीन पर मैदान में दाखिल हो रही है, और बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया है क्लिफ्टन की टीम ने पहली इनिंग्स में, और 59 रन के करीब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बर्तरी हासिल की है। फ़ारूक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया राना जी। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्लिफ्टन पॉपुलर की तरफ से, कम्प्लीटली डोमिनेट करते हुए नॉर्थ नवाब बिल्कुल बैकफुट पे चले गए, और पहले ओपनिंग पार्टनरशिप शानदार रही असद शाह की और फहाद चुन्नू की। उसके बाद आगाज़ उन्होंने अच्छा लिया था नॉर्थ नवाब ने, और वही 2 स्टार प्लेयर वापस आ रहे हैं, वहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे जहां उन्होंने सिलसिला रुका था। तो नॉर्थ नवाब के 2 ओवर के बाद फिर उन्होंने बिल्कुल ही सही से वो मैच में नहीं रह सके, और विकेटें गिरती गई। हैट्रिक भी हुई मंसूर की। इन दी एंड 59 रन की यहाँ पर लीड हासिल है, और बड़ा अच्छा मौका यहाँ पर कि ये लोग तेज़ बैटिंग करते हुए 100-125 रन और जोड़ें, और कम्प्लीटली जो है वो बैकफुट पे कर दें नॉर्थ नवाब को, इनके चांसेस को बिल्कुल ख़त्म कर दें ये मैच जीतने के लिए। डीएचए दबंग्स ने 40 रन की लीड हासिल की थी गुज़श्ता मैच में, और फिर सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके और वो मुकाबला हार गए थे। यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है, देखना है पॉपुलर के साथ। लेकिन दूसरी जानिब नॉर्थ नवाब्स की टीम पे प्रेशर है इस 59 रन का भी, और प्रेशर है इन दोनों बैट्समैनों का भी जो बैटिंग करने के लिए विकेट पे पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों ने हाफ सेंचुरीज की थी पहली इनिंग्स में, और 141 रन्स ओपनिंग स्टैंड के लिए जोड़े थे मैच 6 ओवर्स में। और बड़ी उम्दा बैटिंग की थी न सिर्फ असद शाह ने, जो कि टीम के कैप्टन हैं, और दुबई से उन्होंने लैंड किया है आज ही पाकिस्तान में, और फहद मियाँ चन्नू जो कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके नाम के साथ उनके शहर का नाम भी जुड़ा हुआ है। वैसे उनका नाम जो है वो फहद आलम है, लेकिन चूँकि टेप बॉल में निकनेम्स बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी निकनेम्स जो हैं वो बहुत देखे हैं, और निकनेम्स ही से पुकारा जाता है खिलाड़ियों को। आसिफ पठान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे फ्रॉम द फार एंड। बिल्कुल उनके बैक पे जो है वो समंदर है। बेहतर गेंद थी जिसे खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री के आधे रास्ते में रोका, और पहला रन इस इनिंग्स का। यूँ तो ये 1 रन बना है, लेकिन इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि 60 रन स्कोर है एक गेंद के बाद। जी, अगर बाउंड्री नहीं भी लगती तब भी 1s and 2s की मदद में आराम से 60-70 रन जोड़ के एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों बैट्समैनों की जो नेचर है वो रुकने वाले नहीं है। असद शाह ने 1 रन ज़रूर बनाया, लेकिन अब फहाद की कोशिश होगी कि इनके जोन में बॉल आए। जी हाँ, और फहाद ने पहली गेंद को लिफ्ट कर दिया है खूबसूरती के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी, छक्का। शानदार फॉर्म में है, और ऊपर से फुल टॉस यहाँ पे मिली लेग स्टंप पे। बहुत ही इजी शॉट उनके लिए, इसको एग्जीक्यूट करें। राउंड द विकेट आए, और बिल्कुल भी वो एंगल क्रिएट नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो राउंड द विकेट। एक राइट हैंड बॉलर आता है, कोशिश ज़रूर थी, लेकिन बड़े आराम से इसको बाउंड्री रोप से बाहर पहुँचा दिया। बड़े चक्कर उन्हें पिछले मैच में लगाए थे। इतना बड़ा शॉट तो नहीं था, लेकिन बहरहाल 6 रन हासिल हुए इस इनिंग्स का पहला छक्का। एक और ऊंचा शॉट, और इस मरतबा गेंद ने टप्पा खाया, फील्डर के पास पहुंची। 1 रन बनाने में कामयाब हुए फहद। ये ठीक है कि बैट्समैनों के पास बल्ले बहुत अच्छे हैं, और वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और बॉलर्स के लिए बहुत कम है इस खेल में, ख़ासतौर पर ट्रेप बॉल में डग आउट यहाँ पर पॉपुलर्स का। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बॉलर्स बहुत सारी फुल टॉसेस कर रहे हैं। हाफ ट्रैकर करने के बाद अगली ही गेंद फुल टॉस, तो कहीं ना कहीं पिच को रीड करना, कितने यार्ड्स की विकेट है और क्या है, इस गेंद के बाद बात करेंगे। और इस मरतबा ऊंचा और ज़ोरदार शॉट, गेंद हवा से बातें करती हुई ग्राउंड से बाहर जाकर गिरी। एक और खूबसूरत छक्का। तो होता ही है कि इनको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ इनकी लीग्स देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पर हर जगह पे विकेट एक जैसी नहीं है। कहीं पे तो 28 कदमों की, कहीं पे 30 कदमों की, और ज़्यादातर सीमेंट विकेट्स हैं। ये लास्ट छक्का हम दोबारा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बॉलर्स को एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इंतहाई खूबसूरत शॉट असद शाह का, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले। इस गेंद को लेग साइड पे भी तो जर्क ऑफ रिस्ट खेलने गए थे, लेकिन गेंद बैट पे आई नहीं।
जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉलर की प्रैक्टिस इतनी हो कि उनको अंदाज़ा हो कि कितने यार्ड की विकेट है, और फुल टॉस और हाफ ट्रैकर से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर वैसे ही मिनिमम है। जैसे लास्ट शॉट देखा आपने, ज़रा सी बॉल अगर और फुल होती तो यॉर्कर लेंथ होती, लेकिन असद शाह जैसे बैट्समैन जो है वो उन्होंने बड़े क्लास शॉट, बड़े क्लास अंदाज में इसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल के 6 रन हासिल किए। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट देखने में बनता है, हल्का सा इनसाइड आउट ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर्स, खूबसूरत छक्का, बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही क्लास का शॉट। इस दफ़ा ओवर एक्स्ट्रा कवर गए, हल्की सी विट मिली थी और ओवर पिच गेंद उसको पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बड़ा अच्छा एलिगेंट अंदाज है, लेजी एलिगेंस हम इनके अंदाज से जोड़ सकते हैं, बड़े आराम से ये स्टांस इनका होता है, लेकिन जब शॉट आता है ये पहुंचा देते हैं बाउंड्री के बाहर। एक ओवर के बाद 20 बकाए किसी नुकसान के। जी हाँ, 20 रन बने हैं। और यहाँ ये है कि अच्छी बात ये है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर वाइड है, यानी आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो वाइड की गाइडलाइन होती है, जो मार्जिन है वही है। फिर विकेट भी जो है वो 22 यार्ड्स है, जबकि हम देखते हैं कि जब अक्सर मैचेस हो रहे होते हैं तो वहाँ पे वाइड बहुत छोटी होती है, आधे बल्ले की वाइड, जो कि अपना बनाया हुआ कानून है, उससे बॉलर के लिए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है सब कुछ। इरशाद अफरीदी ने ओवर शुरू करेंगे, यानी उसके लिए कोई मार्जिन है ही नहीं, और फिर बैट्समैन 30-30, 36-36 रन बनाते हैं और उनका नाम भी बड़ा होता है। लेकिन मैं पर्सनली, ठीक है वो उनकी अपनी कारकर्दगी है और तारीफ भी उनकी करनी चाहिए, मगर बॉलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि क्रिकेट कंपेटिटिव हो सके, मुकाबला बराबरी का हो। तो यहाँ पे ऐसा है, एक तो ट्रफ विकेट और सीमेंट विकेट में बड़ा फ़र्क है फारूक, और दूसरा ये कि यहाँ पे प्रॉपर यार्ड्स की विकेट है और फिर साथ साथ वाइड्स, हर चीज़ रेगुलेशन जो हैं। ये अलग बात है कि 2 रन हैं नो बॉल पे और वाइड पे, वो जाहिर है कि अगर आप मिस्टेक करेंगे, कार्डिनल सिन करेंगे तो फिर पेनल्टी तो आपको पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बैट्समैन के ज़्यादा मौका है कि वो हीरो बने और डोमिनेट करें, बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ मिली और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑफ साइड में, और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, छक्का। और साथ ही ऑफ स्टंप गेंद इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन इसको बॉल को चेस किया, बहुत ही आला शॉट, इसको लिफ्ट किया डेलिबरेटली और कवर्स के ऊपर से 6 रन। और जहां पे ये सिलसिला टूटा था वहीं से आगाज किया है, और छक्कों की बरसात यहाँ पे जारी असद शाह और फहद की तरफ से। बॉलर्स भी बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है और ख़राब बॉलिंग के नतीजे में 6 रन कंसीड किए। ये बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो उनको मार पड़नी ही चाहिए, और पड़ती भी है, लेकिन विद सर्टन रूल्स एंड सर्टन रेगुलेशंस एट टाइम्स ये होता है कि अच्छे बॉलर्स भी पिट जाते हैं, क्योंकि वो इतने आदी हो चुके हैं गेंद आउट अंदर करने के, क्योंकि वाइड छोटी होती है। यहाँ पूरी वाइड है तो वो गाइडलाइन के आसपास अगर बॉल करें तो शायद बच जाएं, लेकिन चूंकि हैप्चुअल हो चुके हैं उन पिचेस पे बॉलिंग करके, तो फिर कभी कभी उनको भी मार पड़ जाती है। तो बॉलर्स के लिए बहुत कम है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकायदा मौका उनके पास भी मौजूद है, और यही वजह हमने विकेट्स गिरती हुई देखी भी हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ा खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस इनटू द कवर्स बाउंड्री, एक और चौका। जी हाँ, बॉल को बिल्कुल मेरिट पे खेल रहे हैं, और साथ ही ऑफ स्टंप गेंद थी और कवर्स की जानिब इसको अपिश्क कवर ड्राइव खेलने में कामयाब हुए। एक बाउंस के बाद बॉल चली गई बाउंड्री की तरफ। अक्सर बैट्समैन कोशिश करते हैं कि इसको ड्रैग करें टुवर्ड्स मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। बहुत ही उम्दा बैटिंग, और एक बुजुर्ग खातून ने भरपूर एंजॉय किया इस स्ट्रोक को, जो भी आपकी स्क्रीन पे थी। अच्छा लगता है जब हर तबके के लोग, हर जेंडर के लोग मौजूद रहते हैं ग्राउंड में और मुकाबलों को एंजॉय करते हैं। क्रिकेट जो है वो हमारे ब्लड में है, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। 30 रन हो चुके हैं दूसरे ओवर में, एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस मरतबा फील्डर रोक लेंगे गेंद को ऑफ साइड में, 1 ही रन मिलेगा। और देखें, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि वन हैज़ टू स्पेयर अ थॉट फॉर द बॉलर्स। बॉलर्स कभी कभार भूखे रहते हैं, लंच नहीं करते अगर शाम में मैच हो, ताकि हम एनर्जेटिक रहें, और फिर भी इतने अच्छे बल्ले हैं, इस तरह की बाउंड्रीज हैं कि आपको 30 रन पड़ जाते हैं आके, और जब 30 रन पड़ गए तो भूखे रहने का फ़ायदा। ये हमारे स्पॉन्सर्स भी आप देख रहे थे ब्लिंक होते हुए आपकी स्क्रीन पर, जिन्होंने KTPL सीज़न 3 को जो है वो स्पॉन्सर किया है, और उनके हम मशकूर हैं। और इस मरतबा गेंद को ऑन दी अप बेल्ट कर दिया है, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस खातून का जज्बा देखें, लुक एट दैट, खूबसूरत छक्के के साथ जो है वो ओवर का इख्तिताम हुआ है, और 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 37 रन। कोई खिलाड़ी आउट नहीं है, प्रीवियस शॉट।
बहुत ही अला शॉट इस दफा असद शाह ने अपने हाथ खोले और साथ ही ऑफ स्टंप को विट मिली। बहुत ही क्लास शॉट, बड़े आराम से इसको पहुंचा दिया। लग नहीं रहा था कि बॉल इतना ट्रैवल करेगी, लेकिन ये इनकी एलिगेंस और क्लास है और एंजॉय करते हुए यहाँ पर लोग, और सही कहा आपने, हर तबके के और हर उम्र के लोग यहाँ पर इस टेप ऑफ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे बॉलर्स एंड बैट्समैनों के बैलेंस की। अच्छा, कुछ तो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, वो हर दौर में रहे हैं। यानी ये अब 84 से ज़्यादा चैनल्स पर आप हमें देख रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जियो सुपर की ये प्रोडक्शन है और हमारी टीम बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी तनदही के साथ यहाँ पर आपको ये तमाम पिक्चर्स प्रोवाइड कर रही है। लाइव पिक्चर्स फ्रॉम DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी। जितनी तारीफ़ करें हम हमारे कैमरा क्रूज़ की, हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे इंजीनियर्स की एंड ऑफ कोर्स हमारी कमेंट्री टीम की, वो कम है जो बड़ी भरपूर कमेंट्री, बड़ी भरपूर कवरेज आप तक पहुँचा रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल अब शुरू होगा। 96 रन्स की ओवरऑल लीड हो चुकी है। यानी अगर 24 गेंदों पर मजीद 50 रन भी बन जाएं, जो कि लग रहा है कि बनेंगे, तो 146-47 का टारगेट होगा। जी हाँ, बिल्कुल हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे विट्टों की ज़रूरत है नॉर्थ नवाब को। और आपने स्किल की बात की और बैट्समैन की डोमिनेट करने की बात की, तो बॉलर्स को अपने स्किल को मजीद इन्हांस करना होगा। हमने कुछ मौक़ों पे देखा कि चेंज ऑफ पेस भी हुआ, बैक ऑफ द हैंड बॉल भी आई, जिसकी वजह से बैट्समैन रिसीव भी हुए, लेकिन स्किल्स में जो है मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बात की ना कि देखिए उस दौर में 80s में जब आम बंदे का स्ट्राइक रेट जो था वो 55-50 बड़ा माना जाता था, 60 का। उस वक्त विविन रिचर्ड का स्ट्राइक रेट 90 था, हमारे ज़हीर अब्बास का 84 था। तो वो खिलाड़ी अब जो थे वो एक्सेप्शनल थे और ऐसे केसेस होते हैं। इस बार तो अब बड़ा एक्सेप्शनल शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। असल मुकाबला नॉर्थ नवाब और क्लिफ्टन पॉपुलर का नहीं, असल मुकाबला असद शाह और फहद के दरमियान है कि कौन ज़्यादा छक्के लगाएगा। और साथ ही ऑफ स्टंप गेंद ऑन द राइज खेले, प्योर पावर, लंबे कद के हैं और इसका फ़ायदा उठाया, लिफ्ट किया उसको लॉन्ग ऑन की जानिब से। एक और ऊंचा शॉट और एक मरतबा फिर गेंद ट्रेवल कर गई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। छक्के रुकने में नहीं आ रहे और दोनों बैट्समैन भरपूर डोमिनेट कर रहे हैं। फहद पहुंच गए हैं 30 रन पर, ऑफ स्टंप से बाहर से पिक किया। इस दफ़ा फ्लैट छक्का, पहला शॉट बहुत बड़ा था, इस दफ़ा फ्लैट छक्का लगाया, लेकिन रिजल्ट वही। फील्डर वहाँ पे मौजूद थे, थोड़ी देर के लिए उन्होंने बॉल को देखा, लेकिन आसानी से बाउंड्री रो को क्लियर किया फहद ने। ही वाज ऑन फायर। और देखें वो एक्सेप्शनल केसेस उस दौर में भी थे। इसी तरह ये टेप बॉल में तमाम तर इसके बावजूद के बैट्समैन बहुत पिटाई करते हैं। कुछ बॉलर्स ऐसे रहे हैं जो आप जिन्हें उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। शाहजहां, आपके ज़हीर कालिया, कर्नल जाहिद, एक दो और बॉलर जो बचते रहे हैं, बीच बीच में तो पिटते रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो अच्छी बॉलिंग करते रहे। लेकिन अगर आप हर बॉलर को कुछ ना कुछ मौका देना चाहते हैं कि अगर वो एवरेज बॉलर भी उसके लिए कुछ मौजूद हो, तो देन यकीनन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे गौर करना होगा जो हमने जिनका जिक्र किया है। इस मरतबा इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। क्या दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे? जी हाँ, दूसरे रन के लिए मुड़े, थ्रो आया और 2 रन मुकम्मल किए अंदर निक ऑफ द टाइम। अच्छी बैटिंग का सिलसिला जारी। जी हाँ बिल्कुल, और 2 रन यहाँ पे हासिल किए और बड़ा रेयर तुमने देखा कि 2 रन भाग के लिए हो। ज़्यादातर दोनों बैट्समैन जो हैं छक्के और चौकों पे ही अपने ये डील कर रहे हैं और प्रेशर अप्लाई होता हुआ यहाँ पर नॉर्थ नवाब। और याद रहे 110 रन की लीड हो चुकी है और अभी भी अगर ये टीम ऑल आउट होती है, टीम डिक्लेयर करती है, 110 का टारगेट होगा। और यहाँ पे 160-170 रन मुझे बड़े आराम से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नॉर्थ नवाब के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसी प्रेशर के साथ साथ गलती भी उनसे हो रही हैं। हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है दूसरी इनिंग्स में भी पॉपुलर्स की और इस गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया। गो के फील्डर मौजूद थे मगर न सिर्फ गेंद उनके ऊपर से गुजरी बल्कि बहुत तेज़ी के साथ भी गुजरी और बाउंड्री से बाहर जा गिरी। एक और छक्का। जैसे कनेक्शन हासिल किया और उनको उम्मीद थी नॉर्थ नवाब के फील्डर से कि कैच हो सकता है, फील्डर बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन एक आध गज ऊपर से बॉल ट्रेवल कर गई। कुछ भी जो है वो नॉर्थ नवाब के फेवर में नहीं हो रहा। फ्लैट छक्का हो या बुलंद बाला छक्के हो, रन आ रहे हैं दोनों एंड से। सैफुल्लाह का बड़ा महंगा ओवर, इसमें अब तक 20 रन बने हैं। न सिर्फ ग्राउंड को दिखाया जा रहा है आपको बल्कि ग्राउंड के ऊपर क्या हालात हैं वो भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। वेल डन जॉब वेल डन बाय देम। 1 रन बनेगा इस गेंद पे।
21 रन इस ओवर से आए। कुल मिलाकर 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। 58 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। फ़ाहद 39, असद 19 रन पे हैं। कमेंट्री के लिए आ रहे हैं जीशान खालिद एंड फलक शेर। Thank you so much, Rana Ashfaq. It's 58 without a wicket after the 3 overs of this innings, and they have started exactly from where they left in the first innings. Both these openers are simply outstanding tonight. And North Nawabs so far have no answer to this onslaught. They just cannot find a way of getting them out. Falak? Yeah, actually, at the moment, the kind of situation they are in, they have nothing to lose, both of these openers, Fahad and Asad. And they've got accustomed to this bowling as well in the first innings. So there will be no point stopping them at the moment. And it looks as if it's going to be Sehram who's been given the ball. They made few changes in the bowling lineup. It was Pathan who bowled the first over in the second innings, but even that wasn't taken into account by both these openers. Fahad once again leading the charge on 39 of just 13. It's a rare missed delivery by the right-hander. Just went a little casual at that, but they can afford to do that. Let's go downstairs and see who is with Hina. Thank you so much. So I have with me two former international cricketer. On my left is Ghulam Ali and on my right is Azam Khan. Thank you so much, gentlemen, for joining me. Well, let's start from my right. नॉर्थ नवाब एंड क्लिफ्टन पॉपुलर आपस में मैच खेल रहे हैं। ज़बरदस्त कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं सर? जी बहुत ज़बरदस्त, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एक अजीब दुनिया यहाँ पर बनाई हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं और टेप बॉल की क्रिकेट हमारे वक्तों में भी होती थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बेस्ट चीज़ है। डेफिनेटली क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस लीग का बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट को। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का टैलेंट नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो हैरान हो रहा हूँ जिस तरह का टैलेंट नजर आ रहा है। और मैं चूँकि खुद अपनी यंगर एज में इस क्रिकेट को बहुत खेला हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो लास्ट 30 ईयर्स से या 25 ईयर्स से 30 ईयर्स से जो बॉलर पाकिस्तान के लिए खेले हैं, उन सब ने ये क्रिकेट ज़रूर खेली है और 99% उनका स्टार्ट है इसी क्रिकेट से होता है। तो इस क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अब ये इतनी प्रोफेशनल हो गई है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब ये दूसरे वर्ल्ड में भी खेली जाने लगी है। और जिसका हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं उनकी क्लिप्स वगैरह, तो ये बड़ी खुशाइन है कि जो लड़के इस खेल में और अपने फैमिली को इससे हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा साइन है कि एक नई दुनिया है, नई क्रिकेट है और डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स इसमें नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू उन लोगों को जो इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं। और टेलीवाइज हो रहा है मैच, और यहाँ पे जैसे कि हमारे बड़े बड़े लेजेंड यहाँ मुंसलिक हैं इस इवेंट से, तो यकीनन बच्चों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है। और KTPL की टीम ने ये कामयाबी से ये तीसरा सीज़न होस्ट कर रहे हैं, तो पूरी टीम के जो एफर्ट्स है उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम के तमाम जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी लाइटिंग ज़बरदस्त है। और जियो सुपर की टीम को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट करा रहे हैं कि लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। वेल, इज़ इट योर फर्स्ट टाइम कि आप इस लीग में आपने विजिट किया है और मैचेस देख रहे हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं KTPL में? मुझे नसीम राजपूत साहब ने कई दफ़ा इनवाइट ज़रूर किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं गैर हाजिर ही रहा हूँ। लेकिन आज आने का जो इत्तेफाक हुआ, और सबसे पहले नसीम भाई को मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ, तो फ़ौरन आए। और सो इट्स अ 6 अगेन, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और छक्के चौकों की गूंज है। टीम चेयर अप कर रही है। क्लिफ्टन पॉपुलर काफ़ी खुश नजर आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरह इसका फॉर्मेट है कि ये 2 इनिंग को बेस करती है, और जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर पहली इनिंग में अच्छा ना खेल सके तो कम बैक कर सकते हैं। अभी हारून रशीद साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वही बता रहे थे कि हमने इसको इस फॉर्मेट पे किया है कि ये 2-2 इनिंग्स पे मुहित कर दी गई है। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। इस
टूर्नामेंट के लिए। और जैसे कि आपने कहा था कि मैं पहली दफ़ा, लेकिन मैं टीवी पे मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ इसको, और इसका जो पहला एडिशन है और दूसरा एडिशन है वो मैंने देखा है और यहाँ आने का इत्तेफाक हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि एंजॉय कर रहा हूँ मैं भी, और हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं फ़ॉरेन से, उनको हम इत्तेफाक से दिखाने लाए थे, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद थे साइड लाइन्स पे, बट नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। Thank you so much, Hina. We just saw a wicket going down in the previous over, but even then they got to hit 2 sixes. AB Paro, the new bowler in, coming into bowl the 5th over. They are already leading by 135 runs, Clifton Popular. It's almost turning out to be an impossible task for North Nawabs to curtail the batting lineup of the opposition tonight. Falak? Well, in the first innings when they came out to bat, they had to match 141. And now it seems to be the target is going to go beyond 150. So it's not going to be that easy. AB Paro is the bowler who starts off with the dot. Yeah, rare dot ball in the innings. Once again, it was Fahad Mia Chinnu who provided all the entertainment in this innings. Asad has been almost like a silent partner, but not on that occasion. This time the ball has been dispatched. Don't think that has gone all the way for 6. The umpires are still going to confirm it from the 2 fielders out there. In fact, he might ask for the 3rd umpire. It's still a boundary nevertheless. Yeah, he really gave it a whack, did Asad on that occasion. It was short and it was there to be hit, and he hit it well enough. And I think it's landed inside the boundary, so it's going to be a boundary. Yeah, it did, and it seems like even the fielding side has already given up, because there was not a big gap between deep mid wicket and square leg. They could have easily charged towards the ball and could have at least tried to stop the boundary. Yeah, you could see their body language. They're down for the count. The kind of lead and the kind of batting stuff we have seen from Fahad and company. Here are the sponsors of this KTPL Season 3. Couldn't time it well enough, Asad. But they can afford to take few singles, even if they can afford to play a few dot balls because of the position they are in right now, Clifton Populars. They still have 8 legitimate deliveries in this innings. You can expect them to score at least 20 more runs from here on. And if they can do so, Clifton Popular will be needing the highest run chase in the second innings so far in this KTPL Season 3. Well, things do happen in cricket and records are made to be broken. If you can go back to the recently finished ICC World Cup in India, New Zealand went on to make 400 runs, and who would have thought all of a sudden Fakhar Zaman will come into play and win Pakistan a game. Though there was a Dawood Lewis came into play, a little bit of help of the rain, but still. Another inside edge. What an over this has turned out to be from AB Paro. Just 5 runs coming off that. 5 done. It's 81 for 1. 81 for 1 after 5, still 1 over remaining in the innings of Clifton Popular. Yes, you were talking about Pakistan's victory against New Zealand in recently concluded World Cup. Well, yeah, who would have thought after conceding 400 runs, Pakistan will end up winning that game? Well, they got some divine help from Almighty. If not the rain, they would have, who knows, they might have lost that game as well. But sometimes you need to trust the nature, Mother Nature. You're right, but I can tell you one thing. On that night, Fakhar Zaman was absolutely looking like almost impossible to stop. Yeah, definitely. If Maxwell had not played that innings against Afghanistan, Fakhar's knock would have been the best knock of the tournament. Because that was coming A, on a run chase, and B, they were chasing a huge target. And that too against New Zealand. At the moment, it's going to be Saram into his last over, and it's going to be the innings last over as well.
He starts off with a full toss which has been belted hard. It's going, and it's gone! It's a full toss and it can well turn out to be a no ball as well. There you see Shahid Aslam, the on-field umpire, signaling it as a no ball. And his arms are aloft as well. That's a sign that another maximum has come from the bat of the captain. It's not that easy to get that much elevation and the distance on a ball that is so high in length. But such has been the night tonight for Asad. Amazing skill, really. The kind of power they generate from different angles. Very highly skilled and capable, most of these batters in tape ball circuit. Now umpire is having a word with the captain Shafi Agha. I don't know what is happening there. Well, they are making a complaint to the umpire that he gave his signal a little too late. I think he's pretty right. He's supposed to make a signal once the ball has landed. And it was clearly over the waist high. There we see another look at the sponsors of this KTPL Season 3. Gauhar Group of Companies, Nelson Paints, Desert Sound. And UBL Amin obviously being the title sponsor of Karachi Table Premier League. It was a free hit and he missed. Asad. Once again, Sehram not starting the over well. 8 runs have come on the first 2 deliveries. Yeah, but he made a good comeback with that dot delivery. The first full toss, who knows, might have slipped out of his hands. There is a little bit of dew as well. That's high in the air. That is going to land once again in no man's land. Oh my word, they were watching each other. Both of these fielders, a fielder at mid-off and at deep mid-off. And if you check it, it looked like he was all comfortable underneath that. Still, he didn't even get his hands to it. Maybe they are short of confidence now. Not Nawabs. Getting a thickish outside half of the bat. It's going to go over the fielder at backward of point. Might bring up another couple. In fact, they decided not to. Shah wants to be on strike. Or it's going to be Umar on strike, rather, because they've taken only 1 run off that outside edge. I think it's a right call as well. Umar is still very fresh to the crease. Has just faced 5 deliveries. Gets speed and outside the Ostrom with the slowness of the ball. And they're going to collect a bye. Yes, they do. Yeah, good awareness by both of the batters. They know that the body language of the opposition is down. And this is the time they can pick a cheeky single. So once again, it's going to be the skipper on strike. We have seen few dot deliveries. We have seen few slower ones not being picked by the batters. And this time he got plenty of it. In fact, the fielder is trying to get underneath that. The bowler is running backwards as well. And once again, the ball lands in no man lands. There were 4 fielders who were initially thinking about going for the catch, but in the end, the ball stayed away from everyone. Well, Zishan, there are 11 fielders, but actually some of them has to catch the ball. Has just not been their night tonight, North Nawabs. They have been literally slaughtered by the opposition. 94 for 1. They can score 100 once again. They will definitely score 100. That's going to go over the boundary ropes. Well, that was launched from Clifton and that landed in North Karachi. Well, that one went many miles. A huge heave. Finished the innings in style. Have a look at that. Sailing over and out of here. So with that performance, Clifton Popular also becomes the first side to go past 100 on both the occasions in one game. They now lead by 159 runs. And North Nawabs will need to score 160 to win this game. What a batting performance this was, not only in this innings, but in the previous innings as well from Clifton Popular. They carried on the momentum where they left off in the first innings. Both the openers once again came out to bat with an explosive mindset, and they just never looked behind.
Here are some of the highlights. Fahad Miachennu started from very left in the first innings, and Asad was his partner. He too had a go whenever the ball was in his zone. He went over extra cover, couple of boundaries through the covers, and then launched it over long on to mid-wicket as well. He was fed in that direction as well, and finally got a leading edge, and he was caught in the slip region. And Asad hit some lusty blows as well. In fact, it was Umar against Sarvam Kaka, and this was a skipper in the last over, finishing the innings in style with a gigantic blow over long on. Yeah, once again the bat dominating the ball in the second innings of Clifton Popular. They couldn't lose a wicket in the first innings. Just before the start of the second innings, we'll go towards Kainat Imtiaz, who is out there on the sidelines. Assalamu alaikum and good evening. My name is Kainat Imtiaz, and with me today is Bao, CEO E-Zone Business Private Limited. He has been with us for a very long time, but this association with E-Zone has been really important for Badar Expo Solutions. Sir, this is your first time witnessing cricket here in Pakistan. How is your experience so far? Yes, I know the game, but the first time I'm here to see the match. Yes, and Badar Expo. Miss Zohar is my friend. He invited me to join there. I'm very happy for this game. I enjoy the moment, enjoy this time. Zohar Nazir has been working tirelessly to make this event happen, the season 3 of KTPL. What are your thoughts about that? KTPL 3. Yes, I know KTPL before 1 year. Last year KTPL 2, but at that time I didn't Pathan. Right now I'm Pathan, so I come here, and so it's a very good game. I know cricket is a very famous game in Pathan. Everyone like it. I also like it. Will you like to play in the next season? Oh really? Oh, if I can, I will try. Thank you, sir. And that was a good sight to see. People coming from all over the world also enjoying this wonderful game of cricket, especially this UBL KTPL Season 3. As we see, North Nawab openers are getting ready and coming out there at the centre. Well, they have a huge target to chase, 160s to be specific. It's not going to be easy. I've been joined in the commentary box by Rana Ashfaq alongside me. Rana, what do you reckon? It's a big target. It's an uphill task, but anything can happen in cricket, as we all know. We saw a dramatic... And we could see that in the last 2 overs of the previous innings, the shoulders were almost down from North Nawabs. They were not that enthusiastic when they were trying to field. And as a result, Clifton Popular once again scored 100 and technically scored 159 in the third innings. So it's all going to be depending on how the openers are going to operate for North Nawabs. They will have to provide a similar sort of start which Fahad and Asad did for Clifton Popular in both the innings. As you see, Hafiz Pola is going to start the proceeding. He's going to be facing the first ball. Yes, Hafiz Pola is a dangerous customer. So is Shafi Agha, the captain. And they both can do the damage. Here's the first ball. This one is going down the leg side. It has to be a wide. Yes, it is. And now Zishan wants to take a cup of tea, and Farooq Riaz will replace him. Farooq, welcome. Big ask, big target for the batting side. Yes, absolutely. And the major difference was the first innings lead that really pushed North Nawab on the back foot. And Hafiz Pola was quite impressive, but his innings couldn't last long in the first innings. And here he has hit that one in the air. One bounce into the long off boundary for 4. Good shot. Although he did not able to time that one as much as he would have loved, but still got a boundary. Yes, full swing of the bat. He tried to smash it down the ground, but it went towards extra cover.
clearly bounced within the boundary. The first 4 of this final innings. They got to play more strokes like this. Very well bowled. Almost bowled that one up in the block hole and cramped the batsman for the space. Has good delivery, full on leg stump. So margin of error is so minimum. If anything away from the leg stump can be put away easily. 154. They have to climb Mount Everest, and every dot ball will be a real punish. Populars got 141 in their first innings and 100 for 1 in their second. North Nawabs scored 82 in their first innings. This time it just cleared the man who was standing behind the square leg umpire. I think it has been declared no ball as well, and they pick a couple of runs as well. Yes, it is confirmed that that was a no ball, and now the batsman going to have free hit, and he's going to have to play a big stroke on that one. We just praised the bowler as far as the line is concerned, and all of a sudden he lost the line. It was way above the waist. So they need quite a few free hits in this run chase. Hafiz bowler will be very excited. So free hit here. There we go. He has hit that one away into the leg side, and it's gone all the way, sailed over to the leg side for 6 runs. And he cashed this free hit beautifully. Yes, great utilization of this free hit. It was in the slot, and a good swing of the bat from Hafiz bowler. So he paid the price. No chance to get out. And now as a result of the maximum, the bowler has decided to go round the wicket to get some sort of angle. Protection down there. Padmiyajanu does well to cut this one off. Bowlers, most of the bowlers having lack of consistency. They bowl a couple of good deliveries, then they come up with the full toss, or they come up with a very half-tracker sort of a bowling. So they got to be accurate. Look at that. Again, it's down the leg side again. Wide is given. So bowlers are not maintaining their line and length right. And that's why they are getting spanked or getting tonked or getting punished everywhere in the ground. It's right, true, fair enough that this cricket is supporting batters a lot. But still, there are bowlers who are bowling well, and everyone got to be bowling in the right areas. And you still can get people out, and you still can keep the batsman quiet. But this time it has been hit away towards the countrysides. Another single is taken. It's been a long over from Irfan. Now Shafi has got the strike back without facing a ball. He got off strike. Majid Goli showed that bowler can get people out. So did the Irshad in one of the matches. This is very, very poor bowling. He again straight down the leg side, and couple of runs given again. Well, I think fitness also matters to remain consistent with line and length. I'm not sure about the fitness level, fitness standard. If they get tired, they get exhausted, and certainly that is why they tend to lose their line and length. And this over is an example. It's a long one. This one is put away, and put away over to the leg side again. Another 6. Has heaved away beautifully. Good swing of the bat, and what a finish that is. Ideal start for North Nawab, but they need big overs. All 6 overs has to be very big to get close to the target. Lovely bird view of this DHS Sports Club. It's got the old shape, very much similar to Eden Park of New Zealand or Lords of London. What do you see? Yeah, Eden Park. It's more like Eden Park, you rightly mentioned. Eden Park's Auckland in New Zealand. And good camera work as well. You can watch all the angles of the ground in a one shot.
We are sitting at the western part of the ground at the moment. These are our sponsors, Pathways. DHA City. Beautiful place to be lived here. Mansoor has been given the responsibility to bowl the second over for Clifton Popular. He's a left-arm fast bowler. He looks a teenager to me. He's the one who got a hat-trick. Don't forget that. 4 wickets he got in the first innings. But this one is driven away. This one is drilled through the offside beautifully for 4 runs. It pitched a bit up and it got the punishment. Well, today plenty of shots we have seen through covers. Witt outside the off stump, very full. And it's drove it for the boundary here. So decent start for this over. They need big overs. The first over was so productive. 29 came and they need many overs like that. So 4 off the first ball of the new over, and Mansoor once again is off the mark. Hafiz Pola doing a good job so far for his team. And he has got that away, and got that away beautifully. 6 runs are coming at a very good pace, and they need to keep on hitting boundaries if they want to chase it down. Well, just for a couple of seconds, the boundary rider was in business, and Hafiz Pola knew he might be in trouble, but in the end, the ball landed way beyond the boundary. Not the best of connections, but decent enough to take the ball beyond the boundary here. 10 runs of the first 2 balls. So far, so good for North Nawab. Again, even better, through the offside, and it lands in the trees. And then he bashed his bat at the pitch in his trademark style, the Hafiz Pola. He's smacking it around now. Well, that one has been disappearing into the trees. Smacked it over extra cover. It's always glorious to watch anything outside the off stump. Beautifully played, and that is how he celebrates. He would have been penalized had it been a hard ball game for damaging the pitch. And that's what umpire is telling him. That's what he's told by the umpire. Celebrate, okay, it's all right, but don't celebrate on the pitch. Yeah, don't celebrate on the pitch. I was saying that he would have been penalized had it been a hard ball match, but doesn't matter. If it's a tape ball match, pitch is still pitch. So, you got to find another place for the celebration. I think he was spoiling the white mark of the crease, maybe. He could have done on grass. It took an outside part of his bat. Single at the end. They have got off to a very good start. 46 runs in 1.4 overs. But look at the requirement. 114 still to be made for the victory in remaining 26 balls. Still big ask. Well, they need, with the ball inside, need just one good over to stop the flow of runs. Another wide ball. Bowlers are looking all over the shop so far. The first wide of the over. He has been disciplined as far as the liner length is concerned, but he is feeling the pressure. As you can see, a couple of sixes in the boundary. He's still over the wicket. Left arm Mansoor. This will help the batting side. And look at this one. Look at this boy. He was absolutely enthusiastic in the first innings as well. Here he is again showing some credentials of him. 50s up. He's even celebrating the wide ball. I think he has very close connection with Hafiz Pola or his side. This is coming down towards the fine leg boundary.
Somebody has to pick it up from outside the boundary. And one of the security members celebrated as well. Boundary. That was off the edge, off the inside edge. Certainly not the desired placement, but he will take it. The leg slip chased it down, but he wasn't quick enough. So 25 runs off the over, 50 came up in this over number 2, and they haven't lost a wicket. So perfect start, I reckon. Agha Shafi has received just a couple of balls, and he has gone up to 10. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Yes, he has got under the ball, and he has taken that catch as well. So first wicket goes down at the score of 54, and Mansoor is the one who got a wicket on the final ball of his first over. Finally a wicket, and a decent opening partnership has come to a close. He went for the big shot. It wasn't a perfectly middled, so he knew he would be in trouble. And finally a good catch. Two men were converging. No mistake whatsoever. 10 to his name. 54 for 1 on the board. North Nawab lost his wicket number 1. Nawabs got off to a very good start. 54 out of 2 overs. Is a great start by all means, by any standards. But they are still needing 106 runs for the victory in 24 balls. Hafiz Pola still out there with 31. Yahya Khan comes out to bat at number 1 down. Shafi was the first man got out. He bat turned, twisted in fact when he was making contact, and that is why it was a missed time shot. Farhad Abdali will bowl the over number 3 now. Yes, the handle of his bat wobbled a bit in his hands. Abdali started off well. Single doesn't hurt in tape ball cricket, or even nowadays in limited overs internationally. Singles are very much acceptable for any fielding side. That was given as leg by the last run. And Yahya has hit it straight down to the throat of the fielder, who accepted that gleefully, and another wicket goes down. And once again Yahya got out on first ball, and once again he smoked the ball deep down the ground and been taken in the outfield. Farhad got a wicket. Massive disappointment for Yahya. It was the first ball. He had to go after the bowler, and golden duck to his name for the second time in this match. 55 for 2. One other thing which I am noticing, I think here we have bigger boundaries than the other grounds. They usually play the tape ball cricket. That's why a lot of catch are being taken in the countrysides or right at the edge of the boundaries. This ground has bigger boundaries than the other grounds. But this format has also been cruel for the batsman as well, because the question demands to go after the ball right from the first ball, and exactly what happened with Yahya. A.B. Paro, the next man in, and both innings he smashed the ball and got out. And he tried to smash one, but it beaten everything. It did beat the keeper, it did beat the fine leg and the third man, and raced away for 4 byes. I think one good over from the bowling side will certainly seize the chances of a victory for North Nawab. That was the bye, casual effort from the wicketkeeper. A.B. Paro is still on note. 101 runs required of
21 balls. Will they try for the second? Oh! Did it hit the stumps? It looked like it did. But I think batsman was well home. Couple of runs at the end. There you see it again. That would have been tied. It's a good work from the keeper, from the fielder, but well grounded. No real hassle, but nevertheless, it's a good over so far. As I told you before, one quiet over will dent the hopes of North Nawab as they are climbing the Mount Everest here. In the air. Oh, fielder thought he was in business. Actually, he was in business, but at the end could not able to quite take it. Almost another catch at the boundary. Yahya was the first man who got out. He was caught at long on, and this time there was an opportunity at deep square leg. It was very catchable indeed. The height was ideal. Even he had a chance in the second attempt, but he made a mess of it. And he was absolutely furious. It is coming out of the ground. 6 more. Hafiz Bola showing what he's made of, and is still trying hard. He's not ready to give it up. What a tremendous blow that is. Outside the off stump, pitched up, and it's a huge hit over long off. He's a man on fire, Hafiz Bola. 92 to get, 68 for 2 on the board. Some sponsors we have, Sana Noor, Fazan Steel, symbol of quality, AK-48, the brand of quality. So many sponsors, the bowler and fifths here. Top Link, plenty of sponsors have supported Sindh TV as well. State Life Insurance Corporation of Pakistan and Badar Expo Solution. UBL Amin, the major sponsor of this competition. And Zishan Salim Zaki Group is also the part of sponsors. Thanks to Sindh Police as well. And PTV. तो इस तरह 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है. 68 रन हैं 2 विकेट के नुकसान पर. पारो 3 और हाफिज बोला 37 रन पर नॉट आउट हैं. 92 रन अभी भी चाहिए. 18 गेंदें बाकी हैं. और मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर रहे हैं एफएस मलिक. एफएस मलिक, क्या कहते हैं? रन्स तो बहुत चाहिए. नामुमकिन फिर भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट नामुमकिन ही लग रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने राना इशफाक. चूँकि ये क्रिकेट है और ये टेप बॉल है, शॉर्टेस्ट वर्जन है, और जब तक हाफिज बोला क्रीज पर मौजूद हैं, इनकी उम्मीदें जो हैं वो जिंदा हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, जिसे ऑफ साइड में खेले और खेलते ही दौड़ पड़े. 1 रन मुकम्मल किया. अब इक्वेशन ये है कि 91 रन चाहिए और सिर्फ 17 गेंदें बाकी हैं. अगर 17 छक्के लगें तो 102 रन बनते हैं. तो 17 में से कोई 15 गेंदों पे तो छक्के मारने पड़ेंगे. जी हाँ, बिल्कुल. जो भी गेंद ये फेस कर रहे हैं, हर गेंद पर अगर छक्का लगाएंगे तो फिर जाके बात बनेगी. अदरवाइज अपोजिशन जो है वो हावी हो सकती है. हाफिज बोला 37 रन पर नॉट आउट हैं. और इस मरतबा हाफिज बोला ने गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में. फील्डर जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच ना पाए और गेंद टप्पे खाती हुई बाउंड्री से बाहर निकल गई. चौका. ये बल्ले के बीच में तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी 4 रन जरूर मिलेंगे हाफिज बोला को. स्विंग पूरी ताकत के साथ किया था इस मरतबा. स्क्वायर लेग पर जो फील्डर थे गेंद को रोक सकते थे, लेकिन नाकाम हुए और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई. इरफान अब तक 34 रन दे चुके हैं. दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना. इस मरतबा विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, मगर थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोक लिया. डॉट बॉल. गेंदें अब कम रहती जा रही हैं. रन्स बहुत ज़्यादा चाहिए. हालांकि जो स्कोर है एफएस 73 रन चौथे ओवर में 2 खिलाड़ी आउट. किसी तरह ये कम स्कोर नहीं है, मगर चूंकि टारगेट इतना बड़ा है तो ये छोटा ही लग रहा है. बिल्कुल सही कहा आपने राना. जो डेफिसिट था पहली इनिंग्स का, उसी को पूरा करते करते जो है वो ये पीछे रह गए हैं. स्ट्रेट पे खेले. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. वही कर्ज इतना था पहली इनिंग्स का कि उसे उतारने में ही बड़ा वक्त लग गया है इनका. बड़ी एनर्जी इनकी लग गई है और जाहिर है कि अब पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पे 87 रन चाहिए इनको अभी भी, और इस ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवर्स जो हैं वो बाकी हैं. जी हाँ, 59 रन का डेफिसिट था पहली इनिंग्स में और 100 इन्होंने और जोड़ दिए.
तो 159 रन 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। इस मरतबा बड़ा खूबसूरत शॉट, फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 6 रन। बड़ा उम्दा स्ट्रोक, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से मारा है, यहां पर स्लॉट मिला है, विथ मिली है और घुमा दिया है बल्ले को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल आपने कहा, इट्स टू लिटिल टू लेट, सही कहा आपने। बहुत देर की मेहरबान आते आते एक और डॉट बॉल, लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि ये हाफिज पोला के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा और पारो को भी 4 ओवर के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे, कि चलो ठीक है आप टारगेट इतना बड़ा था, लेकिन 4 ओवर्स में 80 का मतलब आप 20 की औसत से रन्स कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी जितनी तारीफ की जाए कम है हाफिज पोला की। लोन वॉरियर हैं अपनी साइड के लिए और बड़ा एंटरप्राइजिंग स्टफ इनकी जानिब से देखने को मिला है। बड़ी उम्दा किस्म की बैटिंग अभी तक इन्होंने की है, चूंकि टारगेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। 159 रन 6 ओवर्स में, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। KTPL सीज़न 3। अच्छा एफएस, आप बहुत सारे टेप बॉल मैचेस कवर करते रहे हैं, ख़ासतौर पे जो मियाँ चन्नू में लीग्स होती हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ ये जो KTPL सीज़न 3 है, इस वक्त तीसरे पावर अंपायर ने नेक्स्ट पावर प्ले का इशारा किया है, यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह की क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिली है अब तक? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है राना। अगर देखा जाए टेप बॉल जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में होती है, उसके मुकाबले में यहाँ पे तहरी पिंडी को लाया गया है बॉलिंग के लिए। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, पिंडी से इनका ताल्लुक है। तो अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेप बॉल जो कि खेली जा रही है पूरे मुल्क में, ये इसका लेवल ही चेंज कर दिया है यहाँ पे KTPL ने। ये टेलीवाइज कर रहे हैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, 84 प्लस चैनल्स पे दिखाया जा रहा है ये मुकाबले। इट्स जस्ट अमेजिंग। कोई शक नहीं इसमें। ये गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर डाइव किया विकेट कीपर ने और पार्शली गेंद को रोका। वाइट बॉल के 2 रन ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जियो सुपर इसको प्रोड्यूस कर रहा है और 84 से ज़्यादा चैनल्स पर हमें लाइव देखा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छी मेहनत न सिर्फ प्रोडक्शन टीम ने की है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है ज़ोहिर नसीर की क़यादत में, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है इस इवेंट को जानदार और शानदार बनाने में। और आपके सवाल में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जवाबन, कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत हद तक देखने को मिल रहे हैं, जो कि दूसरे टूर्नामेंट्स में आपको देखने को नहीं मिलते टेप बॉल के सर्किट में। ये बहुत आम चीज़ है और मैं पिछले स्पेल में भी बात कर रहा था फारूक से, इसी हसन रज़ा, यंगेस्ट मैन नेवर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, 14 साल और 227 दिन के थे जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने टेस्ट मैच खेला था और फिर कुछ वनडे इंटरनेशनल भी खेले पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, 15 वनडे इंटरनेशनल्स खेले और 7 टेस्ट मैचेस। इस दौरान गेंद वापस बॉलर ही की जानिब आई, कोई रन नहीं बन, 1 रन इनफैक्ट बना है अब। तो अब एक तरह से मैच 1 साइडेड फिक्सचर हो गया है, बिल्कुल फतह के करीब नज़र आ रही है क्लिफ्टन की टीम और यकीनी फतह नज़र आ रही है, क्योंकि 10 गेंदों पे 76 रन चाहिए। इसके लिए आपको 7 या 8 रन की बाउंड्री रखनी पड़ेगी कि वो अभी भी अलाइव है मैच में। तो बहरहाल ये इस चीज़ तो ही आप देख सकते हैं, कुछ उतरे हुए चेहरे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है नॉर्थ नवाब के सपोर्टर्स और क्रिकेटर्स अब इस मौके पे। लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा, ऐसा होता है क्रिकेट में। लेकिन इसमें हमें क्लिफ्टन को दाद भी देनी पड़ेगी कि पहली इनिंग्स में जिस तरह की बैटिंग की फहाद और असद ने, वो बहुत जानदार थी। 141 रन 36 गेंदों पे दोनों बैट्समैनों ने हाफ सेंचुरियां की और फिर सेकंड इनिंग्स में भी 100 रन वो करने में कामयाब हुए। ऑन साइड में गेंद निकल गई है, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। अच्छा, बड़ा सही कहा आपने कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनका लैक हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और फिर बाकायदा एक प्रोफेशनली और एक इंटरनेशनल टच इसको देने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ उस कोशिश में कामयाब हुई है ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, और अंपायरिंग जो है उसके स्टैंडर्ड को भी काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूव किया है। ऑफिशियल अंपायर्स जो हैं PCB से जिनका ताल्लुक है, उनको यहाँ पे ऑफिशिएट करने के लिए इन्होंने हायर किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है टेप बॉल क्रिकेट के लिए। एज्ड बाउंस के बाद गेंद गई गली की जानिब, ऑलमोस्ट थ्रो विकेटों में लग गया और बैट्समैन बिल्कुल साफ आउट हैं और उन्होंने सीधा दौड़ना शुरू कर दिया डग आउट की जानिब।
जहां आप रिप्ले में देख सकते हैं, ये तीसरा खिलाड़ी रन आउट हुआ है। अच्छा थ्रो और बॉलर ने कोई गलती नहीं की, सीधा स्टंप्स पे दे मारा और अंपायर ने उंगली खड़े करने में कोई टाइम ज़ाया नहीं किया। 85 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है। 11 रन बनाकर पारो आउट हुए। कराची में मौसम इन दिनों बड़ा शानदार है, न कोई बहुत ज़्यादा ठंड है न कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक जिसे कहने जो खुशगवार एटमॉस्फेयर है। और अगर हम कंपेयर करें, मुआवजना करें, पंजाब में इन दिनों कुछ ज़्यादा सर्दी है और इंटीरियर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी काफ़ी सर्दी है। आसिफ नए बैट्समैन आए हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत ही आइडियल है कराची में, और ख़ुसूसन टेप बॉल क्रिकेट के लिए आइडियल है राना। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ठंड है, हम दिसंबर के महीने में हैं और इन दिनों बहुत ठंड होती है पंजाब में और टेप बॉल क्रिकेट बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन कराची में दिसंबर, जनवरी, इवन फेब में भी मैं समझता हूँ कि ऐसा मौसम रहता है जहाँ क्रिकेट खेली जा सकती है, रात में भी और सुबह के वक्त भी। और अक्सर टेस्ट मैचेस जो हैं दिसंबर, जनवरी में खेलती रही है मेहमान टीमें पाकिस्तान में। आसिफ पठान स्ट्राइक पर हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके पास ऐसा मौका तो नहीं है कि वो अपनी टीम को जिता सकें, लेकिन कुछ बड़े शॉट खेल के वो ख़ुद अपने आप को सेटिस्फाई ज़रूर कर सकते हैं और कुछ अपने एतमाद में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने अच्छा स्ट्रोक ट्राई किया, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन मिलेगा। ये भी एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे मुल्क पे कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मौसम है और हर तरह का मौसम जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान इससे माला माल है। जी हाँ, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से, मौसमी लिहाज से, मादनियात के हवाले से माला माल है और हम खुश नसीब हैं और हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं। और जब देखा जाता है कि टेप बॉल को उठाकर ग्रास रूट लेवल से कहाँ पे ले गए हैं हमारे क्रिकेट लवर्स और स्पॉन्सर्स, ख़ास तौर पे इस KTPL के, तो यकीनन एज ए क्रिकेट फ़ैन दिल भी खुश होता है और काफ़ी पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि हम वाक़ईतन एक लविंग, क्रिकेट लविंग, स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। और इस मरतबा बड़ा ज़ोरदार शॉट और भरपूर कुव्वत से हिट किया, बहुत उम्दा छक्का यहाँ पर आसिफ का। जी हाँ, स्लॉट में थी गेंद और इसको उठा दिया है स्ट्रेट डाउनटाउन, सीधा खेले हैं और एक बार फिर से हवा में है गेंद और यहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जी हाँ, फाद मियां चन्नू ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और अपनी हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है। वहाँ पे फाहद मियां चन्नू को आप खेल से निकाल नहीं सकते किसी भी तरह, बैटिंग में मौजूद हैं, फील्डिंग में मौजूद हैं और हर जगह अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बड़ा शानदार कैच लिया उन्होंने। आसिफ ने एक छक्का लगाया था, दूसरे की उन्होंने ट्राई की, फाहद दौड़ते आए, गेंद के नीचे पहुंचे और फिर गेंद को ग्रैब करने में कामयाब हुए। बड़ा अच्छा कैच। पठान 7 रन बनाकर आउट हुए, 93 पे 4। एक इंटरेस्टिंग बात इस मैच में अभी भी बाकी है, वो ये कि हाफिज पोला को अगर स्ट्राइक मिले, क्या वो अपनी निस्फ सेंचुरी कर पाते हैं कि नहीं। यकीनन उनके पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर होगा अगर वो अपने 50 मुकम्मल करते हैं यहाँ पे, और डिज़र्व भी करते हैं। बहुत ही उम्दा बैटिंग की है अभी तक उन्होंने। इस वक्त उनका स्कोर, उनका इनफरादी स्कोर जो है वो 45 है। 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जबकि नए आने वाले बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान सामने होंगे मुरसलीम। ये बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और फरहाद 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। बल्ला स्विंग किया लेकिन कहीं भी गेंद की लाइन में नहीं थे और कोई मुलाकात मुमकिन नहीं हुई बैट और गेंद के दरमियान। एट टाइम्स मुलाकातें बड़ी मुश्किल होती हैं वैसे भी, और ऐसा ही हुआ इनके साथ। मुलाकातें जब भी मुमकिन होती हैं जब आप अपने पाँव इस्तेमाल करो और कुछ चलने की भी कोशिश करो। वहाँ पे फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज का। बहुत ज़बरदस्त आपने शायराना अंदाज में डिस्क्राइब किया है कि मुलाकात करने के लिए या किसी के पाँव को तकलीफ़ दीजिए, उन्हें बुलाइए, या अपने पाँव को तकलीफ़ दीजिए, खुद जाइए। इन्होंने पाँव स्टक रखे थे क्रीज में। वेल डन।
लेकिन इस मरतबा खड़े खड़े इन्होंने कनेक्ट किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, और 1 रन का और इजाफा, विच मीन्स के पोला के लिए 1 गेंद है, अगर वो छिक्का लगाकर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर छक्का लगाते हैं तो टीम की सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी और हार का मार्जिन जो है वो फिर 59 रह जाएगा। तो लेट्स सी, आखिरी गेंद है इस इनिंग्स की, अगर कोई वाइड या नो ना हुई। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, ऊंचा गेंद ने फील्डर के आगे टप्पा खाया, उनको धोखा देती, उनको बैफल करती हुई निकल गई बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए हाफिज पोला नॉट आउट रहेंगे 49 पे। टीम का स्कोर पहुंचेगा 98 for 4 और इस तरह 61 रन के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला अपने नाम किया है क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने। बहुत उम्दा कारकर्दगी एफएस क्लिफ्टन की जानिब से। जी हाँ, पहली इनिंग्स में इन्होंने अपना धावा बोल दिया था, जिस तरह की बल्लेबाजी की थी फाहद मियां चन्नू और असद शाह कैप्टन ने, और उसके बाद जो उन्होंने लीड हासिल की थी 59 रन की, वो इतनी ज़्यादा थी राना कि उसको पूरा करते करते आई थिंक दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। गुड वर्ड, बिल्कुल, फिर फंसे के फंसे रह गए बेचारे और उस दलदल से निकल ना पाए, क्योंकि 6 ओवर्स के खेल में जहाँ 36 गेंदें हैं वहाँ 59 रन आप पे चढ़ जाएं, 59 रन की बर्तरी आप पे हो जाए आपकी मुखालिफ साइड को, तो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि डीएचए को ज़रूर शिकस्त हो गई 40 रन की बर्तरी हासिल करने के बावजूद। बहरहाल जितनी तारीफ़ करें क्लिफ्टन की वो कम है। असद शाह और फाहद ने बैटिंग बड़ी अच्छी की, फिर उनके बॉलर्स ने भी अपने आप पर काबू रखा और अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए और 61 रन की एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव और कन्विंसिंग विक्ट्री यहाँ पर हासिल की। ये इनिंग्स हाईलाइट्स हैं इस इनिंग्स की, जो आखिरी इनिंग्स थी इस मुकाबले की। जी हाँ, इनके जोन में जब भी बॉल आई है इन्होंने उठाकर उसे खूब सजा दी है। हाफिज पोला 49 रन बनाए हैं, अनफॉर्चुनेटली अपनी हाफ सेंचुरी तो मुकम्मल नहीं कर पाए। ये इनका टिपिकल सेलिब्रेशन का अंदाज है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड भी है इन अ सेंस। जी हाँ, और इस पर अंपायर ने उन्हें कहा कि भैया आप कहीं घास वगैरह पे अपना बल्ला मारिए, भले सेलिब्रेट कीजिए, मगर पिच को डैमेज न करें, क्योंकि वो बैट पिच पे मारते हैं और वो सीमेंट विकेट होती है जहाँ पे अक्सर खेलते हैं आजकल के जो टेप बॉल क्रिकेटर हैं, उसको तो शायद नुकसान नहीं पहुँचता, मगर ये विकेट जो है वो डैमेज हो जाती है, जो ट्रफ विकेट होती है। तो लिहाजा और इस पर तो बड़ी पेनल्टी भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने समझाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह से जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया। वेल जी, ये कहा जाता है क्रिकेट में राना इशफाक के योर स्ट्रेंथ्स आर योर वीकनेसेस। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हाफिज पोला सेलिब्रेशन में अपना बल्ला भी तोड़ बैठे। ओह, वैसे भी आप देखें कि जो बैट्समैनों का स्ट्रॉन्ग जोन रहा है उसी स्ट्रॉन्ग जोन में फिर अच्छे बॉलर्स उनको आउट करते हैं, चाहे वो सईद अनवर हो चाहे इंतजाम हो। ये बैटिंग कार्ड है, उसमें हाफिज पोला नुमाया है 49 रन के साथ, 10 रन शफी के और 11 रन थे पारो के। पिक ऑफ द बॉलर्स 2 विकेटों के साथ फरहाद रहे और 1 विकेट मिली मंसूर को। ये मैच समरी है। क्लिफ्टन 141 पहली इनिंग्स में, 72 थे वहाँ पर फहद के। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 100 रन किए 1 विकेट पे, और दूसरी इनिंग्स में जो है वो हाफिज पोला ने ज़रूर 49 रन बनाए नॉर्थ के लिए। पहली इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 82 रन किए थे, दूसरी में 98 किए। इस तरह 61 रन से मुकाबला हार गए। अब हम आपको लेके चलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे लाइव तो आप देख सकेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।
अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के 7th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर 84 ममालिक वो कि जहां हमारी नशरियात जा रही है और जहां जहां भी हमारे मैचेस देखे जा रहे हैं, आप सब लोगों को DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान अकेडमी से खुश आमदीद कहता है। आज इस मैच में बहुत ज़्यादा मुकाबला देखने को नहीं मिला क्योंकि वो टीम जिसने अपने पहले मैच में ज़बरदस्त फाइट दी थी डिफेंडिंग चैम्पियन DHA दबंग को, आज वो बिल्कुल भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए और उन्होंने इस मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने नॉर्थ नवाब को 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और अपनी पहली फतह हासिल की। वेल प्लेड क्लिफ्टन पॉपुलर। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन द वन एंड ओनली ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। उनके साथ मिस्टर जहाजेब यूसुफ मेंटोर नॉर्थ नवाब, उनके साथ मिस्टर अर्श नसीर डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस पैटर्न बॉडी है इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। उनके साथ मिस्टर वकार हुसैन मेंबर मैनेजमेंट कमेटी UBL अमीन KTPL। उनके साथ मिस्टर इमरान अली रोशन प्राउड ऑनर ऑफ नॉर्थ नवाब डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप। सर बहुत बहुत मुबारक हो इमरान भाई, आपको क्लिफ्टन पॉपुलर को बहुत बहुत मुबारक हो। और उनके साथ मिस्टर शायान अहमद थानवी, ये डायरेक्टर हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजी के, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ शायान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महद जीशान ऑनर ऑफ नॉर्थ नवाब, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं बात कर लेता हूँ इस मैच की तो फिर बैटिंग तो छा ही रही है। जिस तरीके से आज FMC फहद मियाँ चुन्नू और 360 असद शाह ने बैटिंग की है, वो कमाल की बारी रही थी। फहद मियाँ चुन्नू ने 72 ऑन 20 बॉल्स विद 4 4s एंड 8 6s। असद शाह 58 on 17 balls with 2 4 and 8 6s। इसी तरह हाफिज पोला 49 नॉट आउट on 19 balls with 4 4s and 4 6। लेकिन वो बॉलर कि जिसने मैच को बदलने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोई और नहीं, पहले ही इनिंग में 37 for 4 और दूसरी इनिंग में 25 for 1 ओवरऑल 62 for 5। मैन ऑफ द मैच फ्रॉम क्लिफ्टन पॉपुलर मंसूर, वेरी वेल बोल्ड मंसूर। आइए मंसूर। मंसूर वैसे ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की आपकी जीत रही। बैटर्स आज इस मैच में आपके ज़्यादा छाए हुए थे लेकिन आपकी बॉलिंग ज़्यादा क्रूशल रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बस आज परफॉर्मेंस आज अच्छी रही। ये डेब्यू है आपका? जी डेब्यू है। क्लिफ्टन पॉपुलर से आपने डेब्यू किया, कैसी टीम लग रही है? लेके चल रहे हैं, सबको एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना? जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। जैसी बॉलिंग करते हो वैसे अब बोलना भी शुरू हो जाओ मंसूर, क्योंकि अब सारी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। ट्रॉफी लाइएगा, इधर आइएगा जरा। मुश्ताक मोहम्मद साहब, फॉर्मर कैप्टन, लेजेंडरी कैप्टन, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी सर। आए सर। अभी रुकेंगे आप, अभी आपका एक और भी इनाम है जी लेकर आइएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अर्श नज़ीर डायरेक्टर, आगे आइएगा अर्श भाई एक कदम, और ये चेक पेश करेंगे। डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस पैटर्न बॉडी ऑफ UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। मैं वकार हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आएंगे और ओसाका लाइट्स का गिफ्ट हैम्पर पेश करेंगे। हमारे स्पॉन्सर हैं ओसाका लाइट्स का गिफ्ट हैम्पर पेश करेंगे। मैन ऑफ द मैच आइएगा मंसूर। थैंक यू एंड वेल प्लेड मंसूर। थैंक यू वकार हुसैन साहब। और अब मैं दोनों टीम ऑनर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों आगे आएंगे। मिस्टर इमरान अली रोशन एंड मिस्टर महद जीशान,
प्लीज़ आप आगे आएंगे और हमारा जो एक अवार्ड हमने शुरू किया है, फैन ऑफ द मैच अवार्ड। तो फैन ऑफ द मैच अरमान अली रोशन। अरमान अली रोशन। और ये रोशन सितारे वो हैं कि जो आने वाले वक्त में यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे। Thank you very much, Mr. Imran Ali Roshan, and thank you very much, Mr. Mahad Zishan, and good luck for the remaining matches. तो thank you very much, Mr. Mushtaq Mohammed साहब and all the presentation party, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के दिन इतना ही। आप यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट अकेडमी से इजाज़त चाहता है। आज यानी कि ज़ाहिर 12 बज चुके हैं, तो आज फिर डबल हेडर आपके लिए इसी ग्राउंड से लेकर आएंगे और आप शाम को 6 बजे तमाम मुकाबले बराह रास्त देखेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।